Welcome, ladies and gentlemen. You guys are watching Samsung Play Galaxy Cup, and this is going to be the third stream, but on the second day, where we're going to be bringing you so much of action. Joining me this time around is going to be a different person altogether. This is the first time I'm going to be sharing my desk with him. With honor, let me invite to you, or rather, I would say, let me call upon a man with the crown himself. It's going to be Rush Kash. Thank you so much for coming in, Rush. How are you feeling today? How excited are you for today's stream? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पर आर का यहाँ पर जो वार्म वेलकम के लिए और मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्शन के लिए और आपके साथ यहाँ पर जो है एक जुगलबंदी देखने को यहाँ पर मिलेगी, उम्मीद रहेगी और देखेंगे कि आज के जो मुकाबले हैं वो किस तरीके से रहते हैं क्योंकि ये प्ले गैलेक्सी कप ज़रूर मैं पहली बार यहाँ पर आपके साथ जुड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं न कहीं बैकएंड पे यहाँ पर फॉलो कर रहा था। कुछ कमाल की यहाँ पर जो रेसिंग जो है देखने को मिलती है और जब हम लोग देखते हैं ऐसे गेम्स तो अपना भी जो बचपन है यहाँ पर जो बचपन तो अभी भी चल रहा है, बट वो कहीं न कहीं यादें जो है कहीं न कहीं ताज़ा सी हो जाती है जब हम लोग भी यहाँ पर खेला करते थे डिवाइसेज़ पर। Very much, very much. But I love every bit of your, energy which you're showing out here. But hopefully, we're gonna see much more of people joining us on our Samsung Experience Store. This one stream is going to be happening exclusively for our Phoenix Market City, Chennai. So we're going to be live from Phoenix Market City, Chennai. There's going to be a meetup as well over here. Make sure that if you guys are watching this stream and you stay somewhere around this region, immediately head on to the nearest Samsung Experience Store and be a part of this event. Now, we have been speaking a lot about all of these events. Let me remind you yet again what this event is all about. This is an event where we're going to showcase some talents for some gamers who come in. They have a first-hand experience on two of our, hero devices. One has to be जी। the Samsung S24 FE. The other one has to be the Fold 6. So, and players will try to do, play games on these devices to showcase their talent. And once they're satisfied with it, we're going to be marking one of them as the winner, who's going to have the shortest time when it comes to their lap time playing asphalt. Now, Rusher, previously we saw two events take place. One amongst them was जी। in Bangalore, and we saw a 29-second mark, 29, where the average was around 39. There was one person 29. Do you think that somebody is going to be breaking that record over here in Chennai? देखिए, वो वक़्त ज़रूर बताएगा कौन यहाँ पर जो बाज़ी मारेगा, क्या कोई 29 सेकंड से भी कम वो लैप टाइम लेकर जाएगा, बट मुश्किल है। वो कार्य यहाँ पर नामुमकिन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलात बना रहने वाला है। उसके लिए एग्ज़ीक्यूशन बहुत कमाल का यहाँ पर चाहिए रहेगा। अगर आप Yeah. हल्का-सा भी गलती करते हो, वो समय फिर जो है आगे निकल जाएगा, बट लेट्स सी चीज़ें किस तरीके से रहेंगी क्योंकि एक्शन बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट जो है अब होता नज़र आएगा। 100%. But you guys are watching the Samsung Play Galaxy Cup. Remember, all of these events are taking place at your nearest Samsung experience store. What do we say by an experience store is where you're going to have a first-hand experience on the devices whichever Samsung has produced so far. And not only that, you're also going to have an opportunity to check out all the other products which Samsung brings in over here, all the top products. And speaking about products, we're going to be specifically speaking about two for you guys, since we are all gamers and we look forward for some good devices which is going to allow us to grind, and not only grind but also allow us to showcase our talent and become gamers ourselves. They're going to be two devices. One is going to be S24 FE, as well as the other one is going to be Fold 6. My friend Russia and me, we're going to make sure that we speak more about it. But when it comes to experience, though, my friend Russia, I know that you've been tracking down a lot of cities, you've been tracking down a lot of stores. So could you be, it would be great if you could share it amongst our audience friends so that they can head on to their nearest Samsung experience store. तो देखिए, अगर बात करी जाए स्टोर नेम्स यहाँ पर जैसे आपने बात करी सिटीज़ की तो गुड़गाँव, दिल्ली, नोएडा मतलब जितनी भी यहाँ पर जो है पॉपुलर प्लेसेस हैं आप वहाँ पर जाके देखिए विज़िट तो यहाँ पर ज़रूर कर ही सकते हैं। देहरादून, इवन लखनऊ जो कि मेरे भी घर के यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक यहाँ पर रहेगा तो मैं भी यहाँ पर जाऊँगा, चेकआउट करूँगा और 23 और 24 दोनों दिन है तो अगर आप कल के दिन भी आकर जो एक्शन में हमारे साथ जो है जॉइन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो अपना करवा सकते हैं। बट अगर स्टोर नेम्स की बात करी जाए तो जैसे कि गुड़गांव में हमको जो है स्पेक्ट्रा एंड स्टार, यहाँ पर कन्वर्जेंस लिमिटेड, आदि मॉल यहाँ पर जो है देखने को मिल जाने वाला है। फिर आदि प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा रजौरी गार्डन के अराउंड, एंड देन इसी तरीके से जो लिस्ट यहाँ पर जो पूरी निकल कर देखने को मिलने वाली है। सो आप लोग अगर नहीं गए हैं अभी तक, चेकआउट यहाँ पर नहीं करा है और प्ले गैलेक्सी कप में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जाइए अपने यहाँ पर नियरेस्ट सैमसंग स्टोर्स में हमारे साथ एक्शन का जो लुत्फ है वो उठाइए। 100%. Now you spoke about Gurgaon. You also spoke about one place from Delhi. I'm just going to shed some light on other places as well, like Noida. We have the
AGMATL. It's going to be Augmentel, if I'm not wrong. Augmentel. जी। But people from Noida know it very well, right? India Private Limited. That's actually present at the DLF Mall of India. I know this one location. I've been there. It's a beautiful mall. If you guys are nearby, do not forget to check that out. And then you have the Aurora Enterprises. That's going to be Old Connaught Palace at Dehradun. Who has not been to Old Connaught Palace when somebody has been to Dehradun, right? So everybody knows this location well. If you guys are around this region, remember that you can visit the Sony Experience Store on the 23rd and the 24th as well. If you guys are around Lucknow, you guys are on luck as well, because Lulu Mall Lucknow is going to be one of those hubs where you'll find another Samsung Experience Store, and we're going to be making sure that we cast few of the games which is going to be played over there as well. But as of now, yes, we are live from the Phoenix Marketcity, Chennai, and it seems like recently there was a storm which took place over there. There was a little bit of a cyclone coming in, and this time around the cyclone is going to be happening within the devices, as it's going to be players trying to showcase their talent. They're going to make sure that they bring in their A game, and me and Russia, we're going to try to do our best to give you a little bit updates of what is going to happen. But before any further ado, Russia, a budgeted phone is going to be an S24 FE. What is your most favorite feature in this S24 FE, if I have to ask you? देखिए, अगर बात करी जाए एक बढ़िया फीचर की, जैसे कि आपने मेंशन करा कि अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पर चेकआउट करना है, तो आप सिंपली ना उसके ऊपर स्केच करिए, सर्कल करिए, आपको जो है सीधा यहाँ पर जो है लेकर चला जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कमाल का फीचर जो है देखने को मिलता है। देखिए, हम सब गेमर्स हैं और गेमर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर जो कहीं न कहीं बैटरी की। तो बैटरी यहाँ पर अगर हेल्थ की बात करी जाए, वो Exactly. काफ़ी यहाँ पर शानदार देखने को यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यहाँ पर जो है बैटरी रहेगी, आप उतना ज़्यादा देर तक यहाँ पर जो है खेल पाएँगे और बेहतर रहेगा। बट अब चलिए बाकी की यहाँ पर चर्चा जो है जारी रखेंगे, बट अब रुख करते हैं सीधा आज के दिन के अपने पहले मुकाबले की तरफ। 100% the first race of the day, ladies and gentlemen. We are live from the Phoenix Marketcity, Chennai, a Samsung Experience Store. And this time around, we have a new vehicle altogether, and it's going to be a head-on fight which is going to be taking place. A perfect knockdown from the get-go itself. The tracks have been selected by the player themselves, and they're trying to set a record. And let's remember this, the rules is pretty simple. You need to have the least time. No matter which track it is, you need to have the least time. So you need to choose your tracks, a little bit better. You need to understand everything. A perfect run so far, and I do believe with that Z4 BMW or BMW, he'll be able to somehow cross the finish line before that of 30 or 40-second marker. देखिए, अगर बात कर ली जाए तो अब आगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखिए रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, और इनकी जो लेन है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिशा में इधर-उधर हल्का सा भी भटकें तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो सकती हैं, और कब आपके आपके जो ओपोनेंट्स हैं ओवरटेक कर जाएंगे वो पता लगेगा नहीं। बट अभी तो एक बिल्कुल परफेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, और अभी तक कहीं पे भी जो गलती है वो हुई नहीं है। और चलिए, अब तो फिनिश लाइन इनकी आंखों के सामने है, और इसी दौरान जो जीत है वो अपने नाम करते नजर आएंगे। जरूर थोड़ा सा समय यहाँ पर लग गया, बट आदर्श जो कि इस मुकाबले को 1 मिनट में यहाँ पर जो है अपने नाम करते नजर आएंगे। Yeah, it's a different track altogether, right? Yesterday we had a different track. We had the basic default track. We made sure that we put all the players at the default track itself, because we wanted to make sure that every single player has as an equal ground, and the AI had always been prominent to show these players that this is how you play the race as well. So the Samsung Galaxy AI was always there for the players to support them. But as of now, it seems like we're going for a longer track or a bigger track altogether, due to which the lap time is going to find a new average of 1 minute and 3 seconds. Now Adarsh has done a good job. He's going to be one of the winners of that race which he has played, but has he won something greater when it comes to a Samsung Experience Store? Because the least time is going to be considered. We'll have to wait and see by the end of the stream as to where Adarsh is going to stand. लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें अब रहेंगी आदर्श के लिए। और आपने थोड़ी देर पहले ना वो चर्चा करी कि कौन सा एक फेवरेट फीचर है, उसमें यहाँ पर एक और फीचर मैं अपना जो है एड ऑन जरूर करना चाहूँगा कि वो वेपर कूलिंग चैम्बर जो है ना, क्योंकि हम सब गेमर से देखिए हमने बात करी यहाँ पर जो है
बैटरी की वो एक काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर जो है 4700 mAh बैटरी जो है देखने को मिली है, जो कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए काफ़ी बेहतर है। बट इन सब के दौरान एक फ़ोन को जब आप इतना लगातार यूज़ करते हैं या फिर खेलते हैं कोई भी गेम, खासकर जब कोई बैटल रॉयल गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे कूलिंग भी यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो लैग इश्यूज़ यहाँ पर जो है आ जाते हैं। सो एक वो भी Yeah, फैक्टर है the जो कि frame इस डिवाइस drops. को काफ़ी ख़ास बनाता है। Exactly. When you speak about lags, also the frame drops where the opponents are connecting better shots than you. Even though you feel like you're having an upper end and then you're on the losing end of things, that is where you need to have your phone very cool, cool as a cucumber to be specific. And that is what Samsung is trying to do with you guys, making sure that they give you the top-notch technology so that it becomes easier for you to showcase your talent. Yes, the vapor cooling chamber, it's no more liquid, it's vapor cooling, making sure that everything in your mobile is ready for gaming. Now, this is going to be one of those features, and if I have to bring in a feature myself, I would rather choose the high-end device. That's the Fold 6 because there you have the 120 hertz refresh rate screen, and we all know Yes. that most of the games these days have been supporting 120 hertz. You're gonna be at the tip of your toes. You're gonna have a greater advantage in comparison to the others. Everybody will be moving a little bit slower, and your shot timing, your flick timing, the way you're going to be pressing those boosters when it comes to asphalt as well, everything is going to be perfect. So that 125 hertz 2x dynamic AMOLED display is just going to be an out of the box feature which Samsung Fold 6 carries for itself. अब देखिए आपने बात करी ना एक एमुलेट यहाँ पर जो है डिस्प्ले की, यहाँ पर जो है 2x यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले की, जहाँ पे हम सब जानते हैं कि सैमसंग यहाँ पर अल्टीमेटली जाना चाहता है उस एमुलेट डिस्प्लेस के लिए। और एमुलेट डिस्प्लेस के यहाँ पर जो एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जब आप गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचो या फिर जब नेचुरली भी यहाँ पर सिंपली एक फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हो, एक वाइड व्यूइंग एंगल आपको जो है मिल जाता है। कंट्रास्ट अगर बात करी जाए स्क्रीन पे, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है, थिनर पैनल्स रहते हैं अल्टीमेटली, और जो पावर भी यहाँ पर जो बैटरी है वो भी कम कंज्यूम यहाँ पर जो है करता है, और फिर बैकलाइट यहाँ पर उतनी ज़्यादा जो रिक्वायर्ड रहती नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि एमुलेट और भी ज़्यादा जो है ख़ास यहाँ पर जो एड ऑन करता नज़र आता है उस मोबाइल में फोल्ड 6 के। बट चलिए अब सीधा रुख करेंगे आज के दिन के यहाँ पर जो है एक और नए मुकाबले की तरफ। Absolutely. It's going to be the second race of the day. Yet again, we're going to have a very different track. And I do believe this is going to be the new average or the new track in which the second phase is going to be taking place. The first phase had a record time of 29 seconds. It was a smaller track in comparison to this one. He's got his nitros all built up. Now we'll have to see whether he's going to go for it. The drift is going to make sure that it rebuilds or refills your nitros. Even the collision with the other vehicles is going to allow you to refuel it. All you have to do is double tap it or make sure you tap it 2 to 3 times and make sure that you have that shockwave nitro. So far, it's been a perfect run. A very slow one in comparison to the previous person because no nitros used so far, and every single player in front of him is trying to take a lead. ठीक है, बिल्कुल। और अब यही मौके हैं कि आप पछाड़ सकते हैं। और चलिए अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बूस्ट का यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो कर लिया गया है। अचानक से जो रफ्तार है वो बढ़ाते न जा रहे हैं, टैप करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और अचानक से जब इन्होंने अपनी व्हीकल एक्सेलरेट करी है तो ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक ना पीछे कोई दिख नहीं रहा, अगर यहाँ पर जो लेन में देखा जाए, जो कि सड़क अपने आप में हमको जो देखने को मिल रही है। और रूट भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अपनाया लग रहा है। अभी जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर गलती नहीं करते हैं, दिशा यहाँ पर नहीं भटकते हैं, कंट्रोल बेहतर तरीके से करते हैं अपने इस यहाँ पर जो है कार रेसिंग में अपने व्हीकल को, देन अल्टीमेटली जो जीत है वो प्राप्त करते नजर आएगा ये खिलाड़ी। और इस बार जो मुकाबला है वो यहाँ पर यानी कि जो लैप टाइम है वो 1 मिनट 12 सेकेंड्स और कुछ मिली सेकेंड्स में यहाँ पर जो है आकाश अपने नाम करते नजर आएंगे। Again, Akash, he was very slow. Even though he wanted to stick to the lines of the tracks, he couldn't do it properly. And ultimately, all he had to do was make sure he puts a big number and not a smaller one. And I've been telling you this, if you have to win in this Play Galaxy Cup, you need to have the minimum lap time in comparison to the other players who are going to be playing over here. But Akash did fail to do it because there were several instances in which he could have used his nitros to catch up to the lost time. He didn't do it. I wonder why. Probably is a new player altogether who's trying to give a first-hand experience on this device as well as first-hand experience in the gaming sector as well. But nevertheless, we're going to be heading back to the desk where we're going to be discussing more about the two devices which you guys can come in and experience at our Samsung experience stores. And
One amongst them have to be the Z. It has to be the Samsung Fold 6, because for me it's जी। become so much more special in compared to the others, is because it becomes a wider screen. I would love to relive my memories on a bigger screen. I'd like to watch my games. I like to watch any cricket match whatsoever on a bigger screen altogether. And Samsung Fold 6, since it's a fold, it opens up to be a tablet which is not too big, but which is compact enough to stay in your hands and still give you a wider experience of what you're expecting to see. और देखिए ना, अगर बात कर लीजिए जैसे कि आपने बात करी कि बिगर स्क्रीन रहती है तो एक अलग यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट एक देखने का एक मजा जो है, नजरिया जो है वो एक अलग सा रहता है। बट और साथ ही साथ रे ट्रेसिंग की अगर बात कर लीजिए, एक रियलिस्टिक ग्राफिक्स भी आपको जो देता नजर आता है पीसी की तरीके, जो भी वो भी काफी ज्यादा शानदार यहाँ पर रहता है ग्राफिक। बट अभी अगर बात करें प्रोसेसर की, वो भी काफी ज्यादा शानदार देखने को मिला है। 8 Gen 3 गैलेक्सी विद 12 GB रैम, और ये दर्शाता है कि सही मायनों में जो रैम भी अच्छी खासी है, प्रोसेसर भी काफी ज्यादा शानदार है, और वेब पर कूलिंग चैम्बर तो हमको इस डिवाइस के अंदर भी देखने को मिले। तो ऑल इन ऑल काफी ज्यादा एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर जो है एक ही फोन में यहाँ पर जो है देने की कोशिश करी गई, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं, और जन गेमिंग के बाद भी आप जो है काफी बखूबी तरीके से जो इस्तेमाल है वो करा जा सकता Absolutely. And as you said, the vapor chamber, right? When it comes to the Fold 6, it's 1.6 times larger. Everybody wonder as to why, because obviously a fold device, many of them will be thinking of, cutting down costs to make sure it sounds good, but Samsung doesn't compromise on any of their products. They made sure that they increase the, size of the vapor chamber to make sure that the complete device is cool once you play this. Even when it's folded, there is no heating issues whatsoever. You can use it for gaming as well. Now, as we correctly pointed out, it's not just about keeping your device cool. It's also about you grinding for longer hours. So that is where S24 if it comes into the picture. You have a total of 4700 mAh battery, and that's no joke if you ask me. You can grind throughout the day, and while you charge your device as well, within a fraction of few minutes, by the time you go take a small breather and come back again, it's going to be almost full charge. Again, you can start grinding and make sure that the grind doesn't stop. For a gamer, this is a dream come true if you ask me. For that budget range, where you have cooling, where you have a battery, where you have a good display as well. So I do believe that it's important for you guys to go check out at the nearest Samsung experience stores. और देखिए ना, सैमसंग इसलिए यहाँ पर जाना भी जाता है कि वो कम बजट में यहाँ Yeah, पर जो है एक ऐसी चीजें यहाँ पर जो है मेटलाइज आपको करके देते हैं कि आप अगर एज अ कस्टमर यहाँ पर जाते हो तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर ही यहाँ पर जो है बाहर निकलेंगे। एंड सभी फीचर्स, और जैसे कि आपने मेंशन करा कि चार्जिंग यहाँ पर लगा दी गेम वगैरह खेल कर, और अगर आप दोबारा गेम नहीं भी खेलना चाहते, सपोज आपको कहीं जाना है बट आपको पता है कि यहाँ अभी अभी जस्ट यहाँ पर जो है चार्जिंग यहाँ पर लगाया था, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में यहाँ पर जो है कमाल की स्पीड यहाँ पर रहती है, बैटरी दोबारा से फुल हो गई तो आप लेकर बाहर भी यहाँ पर जा सकते हो। तो यही कुछ फायदे भी यहाँ पर रहते हैं कि बैटरी है भी काफी बड़ी, बट उतनी ही जल्दी यहाँ पर जो चार्जिंग है वो भी हमको जो है देखने को मिल रही है। और अगर आप दोबारा ग्राइंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कूलिंग वगैरह का भी यहाँ पर जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो yeah. व्यवस्था है कर दी गई है, जिसमें फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर जो नहीं देखने को मिलेंगे, लैग इश्यूज नहीं होंगे, हीट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो गेम है और जो फोन है वो स्मूथ ही चलेगा। Absolutely. Now, without any further ado, let me remind you guys that there are going to be several stores where you can visit and experience Samsung for itself. We have spoken about places from Gurgaon, Delhi, Noida, and Dehradun, and also of Lucknow. Right now, we're going to be moving a little bit south, where towards Mumbai, Virar, and Pune. These are the places I would like to cover. Retail shop at Lower Parel is going to be one of those places. Infinity Telecom at Virar West is going to be one of the other ones, and then you have uh, करुणा how do I spell this? मैनेजमेंट Okay, सर्विसेज। yeah, यस, yeah. This करुणा is going to be मैनेजमेंट one of the other सर्विसेज places at लिमिटेड। Viman Nagar, right at Pune. So these are the few places you can go. But apart from this, there's going to be one other place from Pune. It's going to be the Techstar Rail retail at the Seasons Mall. Now everybody knows where Seasons Mall is if you're at Pune. So do not forget to drop in over here. It's a weekend, man. I know you guys head on to the malls to watch movies and whatnot. And at that time itself, you can just go experience yourself a really good Samsung environment. It's going to show you how important Samsung can be in your life, or how easy it can make your life. And that doesn't end there. This is going to be two other malls, which is going to be or two other places in Bengaluru as well. Now, या for those who are in Bangalore and are wondering that only other cities are enjoying, be prepared, because obviously it's going to be two different places. One is going to be Concept Inc at Marathalli.
is going to be from the 23rd and 24th. And then obviously one of the big malls, the Mall of Asia at Bengaluru. These are the two places in Bangalore. And I do believe that, most of these people have already got an idea, right? Gurgaon, Delhi, Noida, Dehradun, Lucknow, Mumbai, Pune, Bangalore, every place is going to be giving an opportunity for you guys to go ahead and showcase your talent, especially when it comes to racing. देखिए बिल्कुल, और अब चलिए ज़्यादा यहाँ पर जो है समय व्यर्थ करेंगे नहीं और देखेंगे कि जो तीसरा मुकाबला है वो यहाँ पर जो शुरू होता नजर आएगा। कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं और कितना यहाँ पर अल्टीमेटली लैप टाइम यहाँ पर रहने वाला है विनर का, क्योंकि पहले दो मुकाबले तो काफ़ी शानदार यहाँ पर जो है देखने को मिले। एक क्षण ऐसा लगा कि हाँ भाई, जिस तरीके से आकाश थोड़ा सा पीछे चल रहे थे बट उन्होंने सही समय पे अपने नाइट्रोस का, अपने बूस्टर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करके सभी को पिछाड़ के यहाँ पर रख दिया। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो उस सैमसंग के यहाँ पर जो है डिवाइसेस में ही जो है खेल रहे होंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर जो है वो आपको देखने को मिलती है सैमसंग के यहाँ पर जो डिवाइसेस के अंदर। बट अगर आप भी जाकर जो है जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं, इस तरीके से जो एक मनोरंजन यहाँ पर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर QR कोड को और रजिस्टर आप जो है अल्टीमेटली वहाँ से कर सकते हैं। Absolutely, but at the same time, looking at this person who's actually right now racing is all the way from Chennai again. He's been sticking to the lines perfectly. He's been using the nitros whenever required. We can see a perfect run and perfect nitros being shown on the side. 47 or 50 seconds in, and he's already crossed 75% of the track. So he's on a very good run. Probably the 1 minute marker can be kind of held up or can be broken if you ask me. Yes, there it is. 1 minute marker has now come in. 2 seconds, 3 seconds, and he's going to be crossing the finish line at 1 minute 4 seconds. Probably a little bit shorter in comparison to others, the first ever racer. It's going to be Ashwin this time around. He had a very good start, but I did not see any kind of drifts coming from his side as well, and due to which he did not have enough nitros to go ahead and use the shockwave to cover a longer distance. बट अगर बात करी जाए, देखिए स्टिल यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करा है। वो सेकंड मैच के यहाँ पर जो विनर थे आकाश, उनसे यहाँ पर काफ़ी लंबा यहाँ पर जो समय यहाँ पर जो है कम यहाँ पर करा, क्योंकि हमने देखा है खासकर वो रेसिंग गेम्स में यहाँ पर जो है ना वो माइनर सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो करते हैं। और यहाँ तो चलिए एक अच्छा खासा जो फासला है वो देखने को मिल रहा था 8-9 सेकंड्स का। बट अब यहाँ पर जो जिस तरीके से अश्विन ने प्रदर्शन दिखाया, उम्मीद ये रहेगी कि आगे यहाँ पर जाने वाले मुकाबलों में भी यहाँ पर जो उसी तरीके से खेलती नजर आए। अगर कुछ और मॉल्स की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, जैसे कि आरका आपने बताया कि मॉल ऑफ एशिया बेंगलोर में यहाँ पर वहाँ पे भी चल रहा है 23 और 24 तारीख को। आप लोग वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सैमसंग की डिवाइसेस को एक बार जरूर चेकआउट जाकर करिए। बट इसी दौरान हैदराबाद की अगर बात कर जाए, इन ऑर्बिट मॉल हैदराबाद यहाँ पर जो है वहाँ पे भी हमको जो 23-24 का एक्शन देखने को मिलेगा। वर्सेस रिटेल मधुपुर की अगर बात कर लीजिए, हैदराबाद है ये भी। एंड देन उसके बाद फिनिक्स मार्केट सिटी चेन्नई, जिसका यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक्शन एंजॉय कर रहे हैं। चेन्नई पे यहाँ पर ये जगह जहाँ पे एक सैमसंग स्टोर्स यहाँ पर जो है विटनेस करने को मिल जाएंगे। और उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते नजर आए, उतना ज़्यादा जो फन है वो देखने को मिलेगा। Absolutely. Now again, we have covered most of the parts when it comes to India, right? At the phase 2. Now phase 1 again, Yes. we did explain to you guys there were several other stores, and for those who did not register at that time are now going to be regretting not being a part of phase 2. You guys do not have to worry about this. All you have to do is make sure you check the description below, and you'll find a link in the description. Click on that link. You can register yourself for phase 3, which is going to be happening at every nook and corner of the country. It might come to your city as well. Keep your fingers crossed. Make sure you register, and in case it comes to your city, make sure you go over there and showcase your talent. And all of this is happening from our Samsung Experience Store, Phoenix, Marketcity, Chennai, where we did see 3 racers, try to showcase their talent. And I'm looking forward to see if some more are going to come in. And my expectations are always high, my friend Rusher. And I believe that we will be able to see someone finish this race before the 1 minute mark itself. लेट्स सी कौन करता है, क्योंकि अभी तो देखा जाए तो दिन के एक्शन की ना मात्र एक शुरुआत सी हुई है। बहुत मल्टीपल रेसेस यहाँ पर अभी हम लोग साथ में यहाँ पर जो विटनेस है वो करने वाले हैं। आई होप कि जो है लगातार कुछ रिकॉर्ड सेट होते नजर आए। तो देखिए ज़्यादा समय जो है वो लगाएंगे नहीं और रुक करेंगे क्या इस बार जो चौथे रेसर यहाँ पर रहने वाले हैं या फिर जो विजेता बनेंगे वो अल्टीमेटली जो है वो 1 मिनट के अंदर, जैसे कि आपने मेंशन करा, उस लैप टाइम में यहाँ पर जो है
विनर तक पहुंच पाते हैं, उस दहलीज को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि शुरुआत तो देखिए ऐसा लगता है ना कि सभी टीम्स ने काफ़ी शानदार, सभी खिलाड़ियों ने इनफैक्ट काफ़ी बेहतर करी है, बट अंत में बाजी कोई एक ही अपने नाम करके लेकर जाएगा। Absolutely. Now he's got that booster. He was clever enough not to use it until he got that open space, but still somebody tried to touch him from behind, and he still got a perfect run, right? He's going well. He's trying to stick to the lines of the track, trying to be a little bit centric in compared to the others, so that, in case things go a little bit haywire, he knows exactly what to do. One shortcut has already been taken, and now that is where he tried to do an air time to, catch up to the lost time, and eventually had to collide down. Now 43 seconds already over, and I believe after this it's going to be a little hard for him to even catch up to what others had put up on board for us. क्योंकि देखिए वो जो गाड़ी पलटी ना, उससे यहाँ पर जो समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं व्यर्थ हो गया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि इनको सबसे ज़्यादा जो समय है वो लग जाएगा। सामने यहाँ पर जो फिनिश लाइन पहुँच तो गए हैं, बट वो 1 मिनट 9 सेकंड कहीं ना कहीं वो ज़ाया यहाँ पर करे गए। बट इस मुकाबले के जो विजेता हैं वो बलराम रहेंगे, जिन्होंने 1 मिनट 9 सेकंड 808 मिली सेकेंड्स के अंदर जो ये रेस है अल्टीमेटली विन करी। बट स्टिल अगर हम बात कर लें तो आकाश से यहाँ पर जो है काफ़ी बेहतर, उन्होंने 1 मिनट 12 सेकेंड्स यहाँ पर जो लिए थे। स्टिल यहाँ पर गाड़ी पलटने के बाद भी बलराम अगर उनको यहाँ पर ओवरटेक करते न जाए तो ये बताता है कि अगर गाड़ी ना पलटती तो शायद वो 1 मिनट के अराउंड जो है टच कर लेते हैं यहाँ पर फिनिश लाइन को। 100%, because he started off perfectly. Even though there was a little bit of a collision, he knew to hold to the center of the track. He knew the shortcuts as well, and that is where he picked up one really good shortcut. All he had to do was make sure he boosts up right next to the ramp, and that's going to give him a little bit of confidence, a little bit more power, so that he can have that air time. With all of these things said and done, we'll see how things are going to look out from here on. But ladies and gentlemen, if you guys are watching this, do not forget to share it among your friends, because this is going to be a one-of-a-kind event from Samsung named Play Galaxy Cup. Now, this event takes place like a LAN event. For those who gamers, if you dream of a LAN event, it's going to be a small LAN event, because all these races are going to take place at your nearest Samsung Experience store. For one right now you're watching is happening at Phoenix Marketcity, Chennai, and this is going to be one of those places you need to head to if you're somewhere closer to this place. Experience gaming firsthand, and also experience Samsung firsthand itself. No matter how many times we say, if you have a first-hand experience of something, if you have the touch and feel of the device, it's going to convince you much better. और देखिए मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मेरे शहर में होता कानपुर में तो मैं ज़रूर जाता, क्योंकि सामने यहाँ पर जाकर ना जब आप डिवाइस अपने हाथ में पकड़ते हो उसका एक फ़ील, जैसे कि आपने मेंशन करा, वो काफ़ी अलग है। ऊपर से हम लोग बात करते स्पेसिफिकेशंस की, हर एक चीज़ मौजूद है। एक ओवरऑल पैकेज आपको जो है इन दोनों ही डिवाइसेस में जो है देखने को मिला है। चाहे हम S24 FE की यहाँ पर जो है अगर बात कर लें, या फिर बात करी जाए अपने जो है फोल्ड 6 की, और आप लोग दोनों ही जाकर डिवाइसेस को यहाँ पर जो चेकआउट कर सकते हैं। बट पर्सन मुझे यहाँ पर फोल्ड 6 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पसंद आया। और साथ ही आपने बोला ना एक छोटा सा लैन इवेंट है यहाँ पर जो है काइंड ऑफ, जहाँ पर प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होकर एक दूसरे के सामने यहाँ पर जो है खेल रहे होते हैं, तो एक इमोशंस भी देखने को मिलते हैं। एक कोई खुशी जाहिर करेगा तो कोई थोड़ा सा यहाँ पर जो निराश होगा, तो अब वो थोड़ा सा एक और मच मोर यहाँ पर जो फन है वो रहेगा। Absolutely, my friend. Absolutely. Now, with all of these things said and done, we have also spoken about our two hero devices, right? And one is going to be a budgeted one. Every gamer dreams of having a budgeted phone, which is going to allow him to grind and make sure that he stays active. And one such device is going to be the S24 FE. Now, most of the features are being phenomenal, and few of them which we need to speak about has to be the two of the most crucial one for the gamers. One is the cooling issue, the heating issue rather, where people have a lot of problems when they're grinding for long hours. And speaking about long hours, you need to also have a long battery life if you're grinding. Now, both of these boxes have been ticked perfectly from Samsung, as they come up with a 4700 mAh big battery for their devices. And these devices are good enough for you to grind throughout the day. You can charge well, you can play well, and with that has to be the cooling chamber as well. Let's see
देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जो डिवाइसेज़ तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं ही हैं, और आपने भी यहाँ पर बताया, और एक फ़ीचर जो कि जेनेरेटिव एआई, जैसे कि आप किसी इमेज पे यहाँ पर मान लीजिए कि किसी ने कोई यहाँ पर जो है, आप ही ने मान लो यहाँ पर घड़ी पहनी है या कुछ पहना है जो कि आपको चेकआउट करनी है, आपको कोई दिख गई कि हाँ भाई कैसे में, तो आप सिंपली यहाँ पर जो है एक स्केच यहाँ पर इमेज करेंगे या फिर ड्रॉ करते नज़र आएँगे सर्कल, एंड देन आप सीधा जो है असिस्ट हो जाएँगे, जिससे कि आपको पूरी की पूरी जो इस प्रोडक्ट के अराउंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आ जाएगी। और गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करी कि बैटरी काफ़ी शानदार है, और उसके साथ साथ जो रे ट्रेसिंग है, जो पीसी की तरीके यहाँ पर जो एक रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके गेमिंग एग्जैक्टली एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इनहेंस और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। Exactly. Now, for those people who are wondering what ray tracking is all about, let me give you a clear picture, right? For those PC gamers, they always have a disappointment that a mobile game is not as good as a PC game. The graphics are not that great. Now, that is where ray tracking comes into the picture. It makes sure that you have the same kind of graphics you get on a PC game, all realistic graphics, and you're going to be so happy when you connect those shots as everybody are visible much more better. But for now, we'll be heading into the next race, I believe, and the next racer is Yes. absolutely ready, all locked and loaded. He wants to make sure that he brings up the new time. And let me remind you, this is a different track altogether, and we're all the way live from Phoenix Market City, Chennai. देखिए, बिल्कुल, और चेन्नई में है तो यहाँ पर जो है कमबैक, यहाँ पर एक विसल पूडू सा यहाँ पर जो रहता तो है ही है। और अगर बात करी जाए तो चलिए, शुरुआत तो यहाँ पर हो चुकी है। ओ हो, ये आप इस तरीके से ना अपनी दिशा से, अपने लेन से भटकना नहीं चाहोगे, क्योंकि जब व्हीकल टकराती है तो ऐसा लगता है कि आपके जो अरमान है ना, वो ख़त्म से होते नज़र आते हैं। अक्सर जीत के जो सपने आप सजा कर बैठते हो मुकाबले से पहले, ऐसा लगता है कि आप पिछड़ से जाओगे। बट चलिए, इस बार यहाँ पर काफ़ी बखूबी तरीके से नाइट्रोस का बूस्टर्स का यहाँ पर अल्टीमेटली जो इस्तेमाल है वो करा जा रहा है। वो स्पेस को यहाँ पर जो है पिकअप करते हुए नज़र आ रहे हैं। 37 सेकंड्स ऑलरेडी यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुके हैं, बट दोबारा से हल्का सा अपनी लेन से यहाँ पर जो है भटके, जिसके चलते जो एक्सलरेट है वो अब फिर से करना पड़ेगा उनको। Absolutely, but at the same time, look at the drifts he's taking to make sure he always has his nitros up. So far, he's done a very, very good job, if you ask me. Yes, the timing has been very close to 1 minute, but due to some obstacles which comes his way, he's going to be restricted to a 1.5 seconds, minute and 5 seconds. There was a shortcut which he could have taken, but he avoided it, went in for a longer route. But it's just that Bahrain couldn't do much. He made sure that he kept the tracks for himself. A lot of obstructions. Did not use the boosters on time. Will be falling short when it comes to being on the top. देखिए, बिल्कुल, बाहर की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी बखूबी तरीके से उनके द्वारा जो एक प्रदर्शन दिखाया गया। और आपने जैसे कि बात करी, उन्होंने अपने ड्रिफ्ट्स का यहाँ पर जो इस्तेमाल है बहुत अच्छी तरीके से करा। एक क्षण ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद वो एक खिलाड़ी ये बन सकता है जहाँ पर 1 मिनट के मार्कर को यहाँ पर जो है उससे नीचे यहाँ पर लेकर आ सकता है लैप टाइम को, और बखूबी तरीके से जो है पार करते नजर आ सकते हैं। बट वही है ना कि शुरुआती क्षणों में अगर आपको 1 मिनट के अंदर ही लैप टाइम अपना यहाँ पर रखना है, तो एक बिल्कुल इंच परफेक्ट रेस आपको आपके हिसाब से चाहिए रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर भटके, किसी ने व्हीकल ठोकी, आपने यहाँ पर जो है लेन स्विचेस हुई, तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम जो अल्टीमेटली यहाँ पर सबको लगता है वो भी आपको यहाँ पर जो है पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिसके चलते मुझे लगता है कि अगर एक इंच परफेक्ट अगर रेस रहती, आई एम प्रीटी मच श्योर कि 1 मिनट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो सकती थी इस मुकाबले में। Absolutely. No, I couldn't have broken the game down that much as you did, Russia. A good one over there. But at the same time, when it comes to a device where you feel that you have enough, right? You're like, I don't have a budget cap, but I want the best in the market. Then Samsung Fold 6 is going to be a device for you, because this is going to be packed with a lot of features, and one such feature which is going to be packed in both these devices, but I love to use it on the Note 6, is going to be Fold 6 is going to be the Galaxy AI. Now, why the Galaxy AI? Obviously, is because I'm more of a traveler, right? I like to be in places. I like to make sure that I do not fall back when it comes to my communication skills, and that is where there is a live translation which happens over here. What does this do? When there's a person who's trying to speak to me in his language, and I make sure that I live track it, I live record it, and then immediately it gets converted to the language which I want to understand, or which I can understand, and eventually I'll be able to bridge up that gap. And such features are there in our Galaxy AI. We're going to be speaking more about it, Russia. But with this, the Fold 6 is going to be out of the box.
देखिए, बिल्कुल। और अगर आपने जैसे कि बात करें, हम लोग एक ओवरऑल पैकेज की जब बात करते हैं, यही सब जो फीचर्स हैं Yeah, जो कि काम आसान करते हैं। अभी आपने बात करी वो वार्तालाप, वो कम्युनिकेशन यहाँ पर आसान होगा 2 लोगों के बीच में बिकॉज़ ऑफ वन डिवाइस। तो ये दर्शाता है कि कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स को यहाँ पर जो है बिल्ड यहाँ पर जो है करा जा रहा है, ख़ासकर यहाँ पर जो है सैमसंग के द्वारा। और उसी के साथ-साथ बैटरी वगैरह, प्रोसेसर तो काफ़ी बेहतर है ही है। और गेमर्स जाते हैं तो वो सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं कि भाई प्रोसेसर कैसा है, यहाँ पर जो हीट तो नहीं करेगा, लैग इश्यूज़ तो नहीं है। जी नहीं, यहाँ पर हर एक सुविधा आपको जो है दी गई है, जिससे कि आप अपनी जो है गेमिंग जर्नी और भी शानदार बना सकते हैं। absolutely, absolutely. You know, at the same time, the S24 FE is going to be one of the other hero devices which you'd want to have for yourself. But yes, we are live from the Phoenix Market City from Chennai, where we are witnessing some races take place. Every single racer out there is trying to do his best to showcase his talent, because Samsung is giving opportunities over here for racers to come in and play at the Play Galaxy Cup. The person with the least time is going to be walking away with goodies and awards. So if you want to showcase your talent, make sure that you come up to the most closest Samsung experience store. And before heading over there, make sure that you also register. For registering, you will be getting a link below in our description. Click on that link. It's an easy process. Register and make sure you visit your nearest Samsung experience store. देखिए, बिल्कुल, जल्दी-जल्दी जाइए और आप लोग भी यहाँ पर जो विज़िट करिए। और जैसे कि मैंने तो आरका भाई यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मेंशन करा भी था कि अगर मेरे शहर में होती यहाँ पर, और मैं सच बात बताऊँ तो मैं गया भी था यहाँ पर जो है 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो है Yeah. लुलु मॉल में अगर बात कर ली जाए। और क्योंकि कल यहाँ पर कॉन्सर्ट्स वगैरह भी थे यहाँ पर लखनऊ में, तो वहाँ पे भी भाई लोग यहाँ पर गए, बट मैंने यहाँ पर चेकआउट नहीं करा। बट आज अगर वहाँ होता तो ज़रूर यहाँ पर जो लुत्फ़ है वो उठाता। बट लेट्स सी अब प्लेयर्स किस तरीके से यहाँ पर जो है जुड़ेंगे, किस तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी रेसेस हमने देखी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव देखने को मिली हैं। और प्लेयर्स एक इतना बेहतरीन तरीके से रूट देख पा रहे हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो सैमसंग के डिवाइसेस का बहुत बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। Absolutely. You know, every person, no matter how much I say, even for Russia, we have been, trying to see the feel of a device, right? And no matter how many times our friends say that, this is a very good device, try to go and buy it. Everybody would want to experience it once, hold it in their hand, try to see how things goes. They want to make sure that they use the device as well, whether it's compatible to their living style and all those things. And I do believe that Samsung falls in place, and that is why Samsung has come up with the Samsung Experience Store here and there. The best part about this store, all you have to do is head over there and you can have your hands on these two devices. You can experience it, you can use it for a brief period of time. If you have some doubts, there are experts standing here and there who are going to come in and make sure that they guide you to understand which device suits you the best. With all of this said and done, I think it's time for us to head into the next race, the most crucial one yet again, because the 1 minute marker, which has been set by our first contender, seems to be still not broken, and that is why we have match number 6 coming up all the way from Phoenix Market City, Chennai. For those who are watching right now, scan the QR which is being visible to the left side of your screens, because it's going to help you guys to come in and participate. But a perfect run coming their side. It's going to be a very, very good start, if you ask me, in comparison to the others. 20 seconds and almost finished 30% of the track itself. The BMW Z4, it's got a very good initial. It's very strong when it comes to the curves as well. Sticking to the lines are going to be much more important. All you have to do is you boost at the right times and you'll be able to reach your location very fast. There was another shortcut which could have been taken, but I do believe he wants to go for the longer one. Probably avoiding obstacles is also going to be a greater advantage. Goes in for a drift, misses it out completely. There's another track in which he could have drifted and gained so much of nitros, but still using every bit of the nitros. 57 seconds, and he can already look at the finish line. Can he cross over before the 1 minute 30? 1.3 seconds. No, he's going to be falling just 0.5 seconds short, and we believe he's going to be the winner of the match, though. But still, Dinesh has not got the right numbers to make sure he's on the top of the board itself. Nevertheless, now we're going to see how things will turn out. A minute and 3 seconds with I believe that Dinesh could have done so much better if he had gone in for if you have taken a little bit of a risk, right? And also if he had used those boosters on a longer run. What I mean to say is that the shockwave, and every single time he was collided with the other two vehicles, he made sure
that he tries to stay stable and at the middle of the track. And if he had taken down one or two players, that would have been also an added advantage to fill up his nitros again, and he could have used it so much better. But Dinesh, a great job जी coming his way. He's done a great, a great race so far, and I do believe that 1 minute 3.5 could be the new record which has been held in this Phoenix Market City so far. तो देखिए बिल्कुल, और दिनेश जिस तरीके से खेलते हुए नजर आए काफी बखूबी तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े से और माइनर सेकेंड्स यहाँ पर जो है ना उनके लिए, अगर वो जल्दी हल्का सा रेस पार कर देते, देन इट माइट बी कि यहाँ पर जो है वो 1 मिनट तक खैर देखिए यहाँ पर जो है पहुंच जाते। बट अगर अभी हम लोग बात कर लें मैथ स्टैट्स पे, तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर नज़र डाल ली जैसे कि आका भाई ने भी बताया। बट एक बार फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये प्ले गैलेक्सी कप में आप लोग भी जो है खेल सकते हैं। सिंपली आपको रजिस्टर यहाँ पर जो है करना है, जाइए अपने नियर यहाँ पर सैमसंग स्टोर्स में, और हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी नाम ले भी लिए, हर एक सिटी को यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है कवर कर भी लिया। तो आप लोग वहाँ पे जाकर चेकआउट करिए और सैमसंग के डिवाइसेस को देखिए, क्योंकि जब आप पकड़ोगे फ़ोन का हाथ में फील लोगे तो ऐसा लगेगा कि परचेस करने का कहीं ना कहीं जो मन है वो कर ही जाएगा। 100%, and that is why it is special, right? You need to have an experience store. Everybody needs to understand an experience store is a place where you can go and touch and feel the device. That's going to be the most crucial one. Lately, smartphones are not just smartphones, right? It's not just a mode of communication anymore. It's going to be a part of your life. It's going to be a style statement when you hold it. So for all of these things, that is why you need to head on to your Samsung experience store to see what Samsung come up with. New technologies, new looks, designs have been phenomenal when it comes to these two devices. I love the most when it comes to the Fold 6, because the Fold 6 it can also open up to be a wider screen. When it's closed up, it's so compact, you can hold it very lightweight. People will feel that it's a bigger device, might be a little bit heavy, but it's very lightweight. It allows you to make it very easy when it comes to your daily lives. Speaking about easy things, we're going to be heading to the next match itself. It's going to be an easy ride for people who do not stress themselves too much when it comes to their nitros. Yes, ladies and gentlemen, we'll be heading back to Phoenix Market City, Chennai, where we're going to be witnessing the next race. That's going to be a match number 7. And the new racer is absolutely ready when it comes to our phase 2. चलिए, एक नए रेस की यहाँ पर जो शुरुआत है वो तो हो चुकी है, और देखेंगे कि कौन इसमें अल्टीमेटली जो विन है वो करने वाला है। बट दोबारा से व्हीकल थोड़ा सा टर्न लेती नजर आ रही है, लगातार कुछ प्लेयर्स जो है वो टेक कर रहे हैं। नाइट्रोस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रिफ्ट्स अगर थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिले देन इट माइट बी पॉसिबल कि ओवरटेक इनके द्वारा करा जरूर सा सकता है। बट अभी तो हल्का फुल्का कोशिश यहाँ पर जारी है। और चलिए हम बात करते हैं ओवरटेक करने की। अल्टीमेटली आगे बढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट्स काफ़ी बखूबी तरीके से देखने को मिल रही हैं। बूस्टर्स डबल टैप करके भी आप देखिए एक्टिवेट कर सकते हैं। एक परफेक्ट रन यहाँ पर ऑलमोस्ट विटनेस करने को मिल रहा है। वापस से एक शानदार ड्रिफ्ट, और इस बार अगर बात करी जाए तो एक शानदार रोल यहाँ पर जो है लीती यहाँ पर नजर आएंगे। और स्टिल यहाँ पर अच्छा खासा समय जो है वो बचा है इनके पास। बट क्या लग रहा है आर का 1 मिनट से पहले, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है if you ask me, because he's way far away from his from the contenders. You see, it's almost been a minute and he's still not even looking at the finish line. And several places we have been witnessing this, right? No usage of nitros. Lack of information when it comes to the game can lead a lot of disappointments. He might have won the race amongst the 5 people he was playing, but remember, you need to have the least lap time to win something from our Samsung Galaxy Cup. He's going to be falling way behind. If he had used those boosters every single time he got that opportunity, I believe he could have finished the race within the 55-second marker itself, because the vehicle was in top speed in most of the race. देखिए बिल्कुल, हरीश की अगर बात कर ली जाए तो अंत में कहीं ना कहीं वो पहुंच गए आकाश के बहुत नज़दीक। 1 मिनट 12 सेकंड उन्होंने लिए थे, हरीश ने यहाँ पर 1 मिनट 11 सेकंड यहाँ पर ले लिए। बट ठीक है, एक जीत है अभी के लिए। अपने मुकाबले में एज अ विनर यहाँ पर जो निकल कर आए इस प्ले गैलेक्सी कप में। शानदार तरीके से जो प्रदर्शन है वो देखने को यहाँ पर मिला है, और भी बेहतर यहाँ पर जो है करा जा सकता था। बट कभी कभार होता है ना कि जब डिवाइस आप पहली बार हाथ में लेते हो यहाँ पर सैमसंग का, या फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है फील यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर जो कई बार थोड़ी देर बाद मिलती है। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स में यहाँ पर जो है कभी कभार जो समय है वो लग जाता है जब आप न्यू डिवाइसेस पे खेलते हैं। तो
Exactly. But if you guys do not want to be a person who's on the losing end of things, make sure you visit your Samsung Experience Store. Because trust me, you do not want to lose a device like this, a device which makes sure that it's there at every look and corner of your life, gives you so much of so much of AI to work with. Because today's smartphones, it's not a smartphone without an AI. देखिए बिल्कुल, और अगर बात करी जाए तो बहुत जल्दी यहाँ पर जब रुख करा जाएगा अपने यहाँ पर जो एक और मुकाबले की तरफ। और इसी दौरान अगर हम लोग बात करें आज का, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी स्टोर्स को तो देखिए बता ही दिया, और उसी के साथ साथ आप किन किन डिवाइसेस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं एक बार फिर से। इन केस अगर कोई हमारे साथ यहाँ पर जो पहली बार जुड़ रहा हो तो उनको रिमाइंड करवाना चाहेंगे कि आप S24E को यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं, एंड फोल्ड 6 को भी यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली मेरा और आरका का फेवरेट जो है वो फोल्ड 6 है, क्योंकि उसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। Absolutely. But at the same time, ladies and gentlemen, we're going to head back right into the action, because it seems like another Razer is ready and he feels to be a little more confident than the others to break that 1 minute marker. Yes, you guys are watching match number 8 in the phase 2, which is taking place at Phoenix Marketcity, Chennai, from a Samsung Experience Store. And let's see what this Razer has got up his sleeves. From the beginning itself, he's made sure to use those nitros to stay to the center of the track, uses a drift at the corner to make sure he catches to the lost time. Now, it's a really good run so far. It's been a perfect run if you ask me, but the initials is going to be so much more important. वेल लेट्स सी। अब यहाँ पर जो शुरुआत तो देखिए काफ़ी बेहतर करी है, नॉकडाउन करके एक परफेक्ट रन यहाँ पर जो है लगातार लेते हुए। खैर इस समय यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा विटनेस करने को मिल तो रहा है, बट क्या ये वो एक खिलाड़ी बन सकते हैं जहाँ पर 1 मिनट से पहले चीज़ें जो है समाप्त करते हुए नजर आएंगे? अभी तो देखिए मुमकिन लग रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है, चीज़ें आसान अपने ओपोनेंट्स की तुलना नहीं, बट एक मार्क यहाँ पर सेटअप का यहाँ पर कर देंगे, चैलेंज यहाँ पर पुटअप करते नजर आएंगे जो आगे आने वाले रेसेस रहेंगे कि आपको भी, हम मेरे को अगर बीट करना है तो चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। बट 55 सेकेंड्स ऑलरेडी बीत चुके हैं और स्टिल यहाँ पर समय है। तो मुझे लगता है आर्गना इस पर्टिकुलरली यहाँ पर जिस तरीके से डिज़ाइन करी गई है ये जो रेस है, इसमें कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज वो 1 मिनट 5 सेकेंड तो कहीं ना कहीं ज़ाया होने ही वाले हैं। Absolutely, but again, it's also designed to make sure that you use your head a little more. Mohamed has got 1 minute 6 seconds on the clock. A little bit shorter in compared to the others. 1 minute 3.5 is the fastest we have seen so far, or a little bit lesser as well. But whereas it's all about how much you're going to catch up, how well you're going to be using those curves. See, the curves are present so that you can use a drift, and then eventually you're going to build up your nitros and use it on a straight path so that you can catch up to the lost time while you're drifting. But whereas since there are opponents as well, if you find somebody trying to stop you in the tracks, you have to make sure you double boost and knock that player out at your top speed. Now, these are the few things which players need to keep in mind. You need to understand the game first before you showcase yourself or showcase your talent itself. So that is what the players will be trying to do at our Samsung Experience Store. If you feel you can play this game well, what's stopping you from going to the nearest Samsung Experience Store? देखिए बिल्कुल, और ज़्यादा समय यहाँ पर व्यर्थ करिए ना, क्योंकि चलिए ठीक है, आज अगर आप नहीं पहुँच पाए तो आप आज रजिस्टर कर लीजिए अपने यहाँ पर जो कि आप कल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ पाए इस प्ले गैलेक्सी कप को और भी ज़्यादा जो शानदार है वो आप जो है बना सकते हैं। आप हमारे साथ यहाँ पर जो है जुड़कर और जाकर मेक श्योर करिए, चेकआउट करिए यहाँ पर डिवाइसेस को भी, क्योंकि जब आप सैमसंग के डिवाइसेस में खेलोगे यहाँ पर जो है रेसिंग गेम्स की अगर बात कर ली जाए तो एक फील जो है ना एक अलग आएगा। और सैमसंग के प्रोडक्ट्स हमेशा की तरीके अगर बात करें यहाँ पर जो कोई भी प्रोडक्ट इवन फ़ोन्स के साथ साथ, तो ऐसा लगता है यार का जब आप उनको पकड़ो तो एक प्रीमियम यहाँ पर जो है फील सी आती है। Exactly. Very much, very much. And that's why I said, if you want a style statement device also, you have to head on to the Samsung Experience. So make sure that, you feel those devices, you understand why it's so good. That's what we've been trying to tell you guys. But eventually now we're going to be heading to the next match. And with this, we're going to be having around 8 to 9 players already playing off their matches, right? It's going to be driver number 9 set off already at Phoenix Marketcity. He's been watching his opponents as well. He's got a very, very good car, if you ask me, which is very strong when it comes to the curves. It's going to be the BMW Z4, which is going to allow him to take down players like how he's doing over here, using those nitros from the beginning to make sure he has a very perfect initial
No, these are the places where he can drift. Yes, he's got a bit of a nitros. He's going to use that to make sure that he catches up to the lost time. But again, a drift at this point of time is going to allow him to fill up those nitros. A little bit already filled in, but can he push some more? वेल लेट्स सी। यहाँ पर जो है शुरुआत एक ऑलमोस्ट यहाँ पर एक परफेक्ट रन जो है देखिए देखने को मिल रहा है, लगातार कुछ बूस्टर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है और एयर टाइम भी अगर बात कर ली जाए तो वो 53 सेकंड का था, जैसे कि हमको जो है साइड में ऑलरेडी जो डिटेल्स है वो देखने को यहाँ पर मिलती है। और अभी अगर देखा जाए तो दूर दूर तक कोई खास नज़र आ नहीं रहा है इनके, और मुझे लगता है कि आसानी से यहाँ पर जो है ये खिलाड़ी जो है विन करते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट नज़र आ जाएंगे, बट वही समय लगेगा ऑलमोस्ट सभी को यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। वो 1 मिनट तो मिनिमम यहाँ पर जो देखिए वो लगी जाता है, वो 3-4 सेकेंड्स तक जो है चीज़ें जरूर ख़त्म करी जा सकती हैं। अंत में पुश भी यहाँ पर करा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं 1 मिनट 4 सेकेंड्स और 709 मिली सेकेंड्स जो है वो लग गए। You know, there were several places where he could have picked up the nitros. He could have just used the drift, which makes sure that the vehicle becomes a little more wider in compared to how you drive straight, and make sure you would have picked up both the nitros, right? Which gives you a greater advantage to be using it. So these are the few places where we have been seeing that players are falling short to understand the game. Yes, the default map is not there this time around. It's going to be a little bit of a challenge because when it comes to the default map, everybody had become masters, and it all came down to 0.1, 0.2 second difference, which we had to at the end of the day give away at the second and the third position. But the top position, a 29-second history was made from Bengaluru Opera House from one of the players. But I believe that we can expect some more really good records to be set off at Phoenix Marketcity, Chennai as well. देखिए बिल्कुल, और अब अगर बात कर ली जाए एक और मुकाबला जो है अब काफ़ी ही जल्दी हमारे साथ जो है वो शुरू होता हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा। और अगर इनकेस जनता हमारे साथ पहली बार जुड़ रही है, वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी जगहों पर ऑलरेडी अपने आप में हमको जो स्टोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं बोलना चाहूँगा सिटीज़ की नेम यहाँ पर गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ, यहाँ पर बात कर ले जाए मुंबई, विरार, यहाँ पर पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, आप कहीं पे भी रहते हो इन सब जगह पे हमारे ऑलरेडी जो है वो प्लेसेस पे यहाँ पर जो है सैमसंग स्टोर्स ऑलरेडी यहाँ पर जो उपलब्ध है। तो जल्दी जल्दी जाइए भाई, चेकआउट करिए और मेक श्योर करिए रजिस्टर नहीं करा जाके रजिस्टर करिए, क्योंकि कल हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस रेसिंग एक्टिविटी में, इस गेम में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। बट एक और नई रेस की शुरुआत है। ऑलमोस्ट अगर बात कीजिए एक परफेक्ट रन एज ऑफ नाउ यहाँ पर विटनेस करने को मिला, बिना किसी गलती के यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरीके से जो ड्रिफ्ट्स एंड जो बूस्टर्स का इस्तेमाल है वो करा जा रहा है। Absolutely. I believe that we're going to have a history made over here. There's a player who can end the race at a very, very early time. Yes, he misses off the final few nitros, but he can build that up. All he has to do is make sure that he drifts at the final few curves to get that average. Right now, 49 seconds or 50 seconds, and he can almost see that he's finished off 80 to 85% of the race. So somewhere all he has to do is make sure he builds up the nitros in the final moment and then uses it to cross over the finish line. 1.2 and 1.3.2 will be the track time which this person has taken, and I do believe that Muhesh is going to be holding the record as of now at 1.3.2. देखिए अगर बात करी जाए तो मुहेश ने यहाँ पर जो है खेला तो काफ़ी बेहतर है, और अगर बात करें जिस तरीके से जो है प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिला है एज ऑफ नाउ आज के दिन का, यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन जो रिकॉर्ड है वो अल्टीमेटली देखिए जो सेट है वो कर दिया है। जो एक बार है यहाँ पर जो अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ और भी ज़्यादा जो है हाई लेते हुए यहाँ पर जो है लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने जो आने वाले रेसर्स हैं उनको एक टारगेट सा जो है सेट करके दे दिया कि अगर आपको मेरे लैप टाइम को बीट करना है तो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। Absolutely. Now, that is the most important thing, right? When it comes to racing, it all matters to that 1 or 0.5 seconds before the trophy is taken away from you. And I do believe that few racers have taken it very seriously. Muhesh, from the beginning, he made sure that he goes for the shortcut routes. He made sure that he reaches places, he reaches those curves which are perfect for him. But one big issue, what happened to him in the final moments of the race, he did not refill his nitros. He did not use those noses at the final moments, due to which he fell short.
Trust me, I really thought that he's going to be finishing the race within a minute and making sure he puts a very, very good trademark out there, but falls short. The decent race, if you ask me, Russia. But with this, ladies and gentlemen, we have been speaking about the Samsung Experience Store, making sure that you guys head on to a Samsung Experience Store, because it's going to be a mini LAN event for the gamers where you guys can not only experience two beautiful devices, but also can be a part of the races which take place over there. All you have to do is click on the link in the description below and make sure that you follow the instruction and register yourself with it. देखिए, बिल्कुल। और अगर बात कर ली जाए तो रजिस्टर यहाँ पर कर लीजिए और मेक श्योर करिए कि कल आप अपने यहाँ पर जो नीयरेस्ट सैमसंग स्टोर्स में यहाँ पर, जैसे कि आपका भाई ने यहाँ पर बताया, आप पहुँच जाइए, हमारे साथ एक्शन में यहाँ पर जुड़िए और डिवाइसेस को भी यहाँ पर जो है चेकआउट करना मत भूलिएगा। बट अभी के लिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के उस पर लौटेंगे कुछ और नए एक्शन के साथ।
Welcome back, ladies and gentlemen. You guys are watching the Samsung Play Galaxy Cup. With me on the desk is going to be Russia Cast. Russia, we had a great races, if you ask me, within the 10 people who have played so far. We have seen like an average of at least a minute and 3 seconds, right? And I'm expecting to see some more people coming and showing a different kind of a momentum, different kind of a timer. And what do you say? Do you feel that somebody can actually break that 1 minute marker? देखिए, मुश्किल है यहाँ पर जो है हमने बात करी भी थी कि इम्पॉसिबल नहीं है अगर कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी अपनी स्किल सेट्स Yeah. को यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करता हुआ नज़र आता है, तो कहीं न कहीं मुमकिन है। अदरवाइज़ वो कहीं न कहीं 1 मिनट 3 सेकंड्स हमने देखा लास्ट रेस में, उतना सेकंड्स यहाँ पर मुझे लगता है कहीं न कहीं ऑन एन एवरेज यहाँ पर जाता ज़रूर नज़र आ सकता है। Absolutely. Now, I know that we are being a little blunt when it comes to the realities of this race, but I somewhere feel that there is one perfectionist, one person who's been grinding, in his Samsung devices, and that's how he'll be able to come in and perform better. We're going to be heading into the next race, but before that, we're going to be speaking about from where you guys are seeing us live. We are live from the Phoenix Market City, Chennai, and this is from a Samsung Experience Store. Now, for those who don't know what a Samsung Experience Store is, it's a place where you can go and experience Samsung devices. Before buying any device, it's important for you to understand the touch and feel of the device and how the device works. So that is why Samsung has bought in a concept of bringing in Samsung Experience Store in every nook and corner of the city. You guys can head over there, make sure that you use those devices, and also to make things so much more interesting, they're made sure to bring in gamers so that they can come in and showcase their gaming talent. They're all playing Asphalt as of now, and we're going to be rewarding a person who comes at the least lap time. And me and Russia are keeping our fingers crossed to see who that winner is going to be. और बिल्कुल, यहाँ पर जो वो निगाहें रहेंगी हर एक खिलाड़ी के ऊपर कि कौन अल्टीमेटली यहाँ पर जो Yeah, सबसे कम टाइम पे यहाँ पर जो आज के दिन खत्म करता नजर आएगा लैप टाइम में यहाँ पर। और ज़हन में यहाँ पर अभी तो फिलहाल एक ही नाम चल रहा है जो कि लास्ट रेस में यहाँ पर जो देखने को मिला। और आपने बात करी कि सैमसंग ना, और ये उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव भी है क्योंकि वो सब जानते हैं कि गेमर्स यहाँ पर पर्सनली पसंद करते हैं कि हाँ, अगर उनके डिवाइसेस में गेम यहाँ पर जो है काफ़ी बेहतर चल रहा है तो फिर वो प्रोडक्ट को यहाँ पर जो अपना बना लेते हैं कहीं ना कहीं। सो एक ग्रेट exactly. इनिशिएटिव है। बट उसी के साथ साथ आप लोग भी यहाँ पर जाकर जरूर चेकआउट करिए क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि ये गेम खाली यहाँ पर जो डिवाइसेस है अपनी गेमिंग के लिए काम आने वाले हैं। आपको अदर भी यहाँ पर चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो करते नजर आएंगे। कुछ कुछ कमाल की आई फीचर्स है। बट चलिए चर्चा जारी रखेंगे अपनी डिवाइसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं यहाँ पर अपने मुकाबले की तरफ क्योंकि एक और मुकाबले की जो शुरुआत है वो बहुत ही जल्द होती नजर आएगी। Yes, it's going to be match number 11, ladies and gentlemen. You guys are watching this race happening all the way from Phoenix Market City, Chennai. And I do believe this racer will have something different. Now, look at that. He's got that initial speed as well. He understands how the games work. Probably he's going to be hitting to the top speed of the car and then probably trying to use the boosters. A clever way to do it, if you ask me. There he's got an opportunity to go for a 360, take players down. He misses out the first shortcut, which has been a great advantage for everybody else. But this turning is going to make sure that it puts away most of his lap time. And no boosters used so far. I don't think so. He's going to be within the 1 minute marker in any way possible. लेट्स सी, 1 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है कोशिश जारी रहेगी। और बोला जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार होती नहीं है। आप इस रेस को तो जरूर जीतोगे, लेकिन अगर वही 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई तो एक नया यहाँ पर जो रिकॉर्ड है आप सेट करते नजर आएंगे। और अभी फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें नजर आ रही हैं आर का लग नहीं रहा है कि वो 1 मिनट में यहाँ पर जो, क्योंकि 1 मिनट तो अब अल्टीमेटली वो कंप्लीट हो गया। बट वही एक बार फिर से 1 मिनट 5 सेकेंड्स के अराउंड आई फील यहाँ पर जो है वो समय उनको जो है लगेगा। बट अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1 मिनट 8 सेकेंड और कुछ 73 यहाँ पर मिली सेकेंड्स के अंदर जो है इन्होंने अपनी जो रेस है वो कंप्लीट करी है। Poor Cody, he could have done so much better. Not using the nitros throughout the race will be something he's learned the lesson the hard way. Now, I'm expecting everybody, every single player out there, or every single probably gaming enthusiast who are trying to head to the Samsung Experience Store to get your hands on devices and to play this game. Remember this, that it's not going to be easy for you if you don't understand the basics of the game. And that's why we experts are sitting over here to give you a little bit of an insight. One, stick to the center of the track. There's something called the line of the track, which the AI will be showing you. Make sure you stick to it. Two, use those curves
use the drift to make sure that you have your nitros all filled up. And whenever given an opportunity, make sure that you use those nitros and stay away from your opponents who try to put you down, who try to decrease your lap time by making sure they obstruct you and keep bashing into you. So these are the few basic things which you guys can try out. But when it comes to the basics for a gamer, two things are pretty much essential. One is going to be battery, and one is going to be a cool device. And my friend Roshan knows exactly which are the devices which can catch up to these two things. देखिए बिल्कुल, और अगर बात करी जाए डिवाइसेस की, तो आपने यहाँ पर जैसे कि बताया कि कूलिंग के मामले में यहाँ पर जो है S24 FE भी यहाँ पर जो है काफ़ी शानदार है, बट फोल्ड 6 एक इलीट यहाँ पर जो डिवाइस अगर बात करी जाए, और डिस्प्ले के मामले में भी अगर जो है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद डायनामिक 2x एमोलेड, और एमोलेड की हमने बात करी थी कि काफ़ी ज़्यादा खासियत तो रहती है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यानी कि जो एक फ्रेम्स हैं, आपको जब आप किसी गेम को खेलोगे आप बहुत अच्छी तरीके से जो चीज़ें जो है विटनेस यहाँ पर जो है कर सकते हो। रे ट्रेसिंग भी है, जैसे कि पीसी लाइक एक रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको जो देखने को मिलेंगे, ऐसे लगेगा कि आप बिल्कुल सामने जो गेम है वो अपनी आंखों के सामने से यहाँ पर जो है खेलते हुए यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हो, बिल्कुल एक आप एक लाइव इंजॉय जो है कर रहे हो। और यही सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन डिवाइसेस को और भी ज़्यादा बेहतर, और भी ज़्यादा जो शानदार है वो बनाती हुई नज़र आती है। बट आपने अभी आकर ना एक बात बोली कि जिस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पर कई बार ना नाइट्रोस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है यहाँ पर जो है रूट को लेकर। अल्टीमेटली उनको नहीं पता कि कब यहाँ पर जो टर्न्स है वो आने वाले हैं, और जब कई बार आप चीज़ों में 100% यहाँ पर नहीं होते हो इन्वॉल्व, कई बार आपने ज़्यादा नहीं खेला होता है, तब आप चाहोगे कि थोड़ा सा स्लोली एंड स्टेडी यहाँ पर जो है आगे जो है बढ़ा जाए धीमे धीमे करके। Absolutely, but at the same time, for a gamer, he needs to be a good observer. So if he looks at the mini map on the top left of the screen, then obviously he'll get to know what the track looks like up ahead. So these are the few things which comes in inculcated for people who observe the game properly. For people who are fast learners will be able to pick up these minute things. I do believe that few people are just trying to push their luck, or just trying to see whether they'll be able to somehow perform when it comes to the Samsung Experience Store. If you guys believe that you guys have got the talent, what is stopping you right now? Do not stop, as we'll be heading into the next race. Very, very soon, we might be casting one of your games. Head on to the nearest Samsung Experience Store. And with this, ladies and gentlemen, we'll be heading to match number 12 at the Phoenix Marketcity, Chennai. And this time around, I'm again keeping my expectations high to see how this player goes. And the first ever initial start has to be a little bit hard for him. The drift has given him a little bit of a booster, due to which he's going to be using it to catch up to the lost time. But again, another curve, sticking to the lines, is going to be tagged a little bit by his opponents. But he can use this shortcut on the left, the ramp. He misses it out completely, making him lose another 2-3 seconds in his overall race. देखिए बिल्कुल, कुछ सेकंड्स को यहाँ पर शुरुआत काफ़ी बेहतर करी थी, लेकिन उसके बाद हल्का सा मोमेंटम बेसिकली ब्रेक होता हुआ इनका जो है वो ज़रूर नज़र आया है। और देखते हैं क्या वो 1 मिनट वाला जो एक हम लोगों ने एक अल्टीमेट यहाँ पर जो है मिलकर एक टारगेट जो है वो सेट कर रखा है, क्या कोई वो खिलाड़ी है ब्रेक करता नजर आएगा, क्योंकि अभी तक तो वो 1 मिनट 3 सेकेंड सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर समय जो है लिया गया एक इंडिविजुअल प्लेयर के द्वारा एक अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाते नजर आए थे उस कार रेसिंग यहाँ पर गेम के अंदर। और चलिए अभी अगर बात कर ली जाए, दोबारा से यहाँ पर एक सही समय पे प्रवेश कर लिया, बट एक बार फिर से 1 मिनट 4-5 सेकेंड्स के अराउंड जो रेस है वो खत्म करी जाएगी 1 मिनट 4 सेकेंड्स एंड 381 मिली सेकेंड्स में। इस लैप को यहाँ पर अल्टीमेटली जो है अचीव करते नजर आएंगे, नाम रहेगा रोशन। No, Roshan, right? Again, as we spoke about it, there are a few lines which you need to kind of bend a little. There are 2-3 places where he lost the nitros. Yes, it was a little away from the car. All you had to do was use a 360. You're going to be boosting your nitros and also making sure that you catch up to the lost time. Now, all of these minute things are things which we have to still learn. So let's see how it goes. But as of now, yes, ladies and gentlemen, you guys are watching us live from the Phoenix Marketcity, Chennai, from a Samsung Experience Store, where we are trying to bring you some talents from different parts of the country who are able to showcase themselves. And all of this is possible because of our Samsung event. Samsung Play Galaxy Cup is an opportunity for you guys to not only play the game and get yourself a bragging rights to be champion, but also gives you an opportunity to experience Samsung devices at the Samsung Experience Store. A mini land event, to be specific.
बिल्कुल देखिए, और वहाँ पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाते हो, अगर आप उनको भी यहाँ पर रजिस्टर करवाते हो, तो वो भी एक्शन में आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बेसिकली काइंड ऑफ एक फन इवेंट है जहाँ पर आप उनके डिवाइसेस को जाकर जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। इफ केस अगर आपको थोड़ी सी और इनकेस अगर आपको इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको स्टोर्स पे काफ़ी बखूबी तरीके से मिल जाएगी, और माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को आपको जो है क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा-सा और एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है समझना है, तो जल्दी-जल्दी जाइए भाई, चेकआउट यहाँ पर करिए। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बार जो है लोकेशंस का नाम और किन-किन जगहों पे, किन प्लेसेस में अल्टीमेटली उन शहरों में यहाँ पर जो है हमारे सैमसंग स्टोर्स यहाँ पर जो अवेलेबल है। तो इस आप लोगों को यहाँ पर जो है बताया भी है, कुछ कमाल के फीचर्स भी हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, जैसे कि एआई वाला वो फीचर, जैसे कि आप किसी से बात यहाँ पर जो है कर रहे हो, उनको सम अदर लैंग्वेज यहाँ पर आती है, लाइक तेलुगु आप उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं समझ पाऊंगा, मैं पंजाबी यहाँ पर जो है, तो आपस में कम्युनिकेशन है। इंग्लिश भी यहाँ पर जो अगर किसी की यहाँ पर हल्की सी वीक है, तो आप उसका भी इस्तेमाल वगैरह यहाँ पर जो है कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आरका भाई से बात करूंगा इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि उस फ़ोन की यहाँ पर जो हेल्प है वो लग जाएगी आरका भाई। Absolutely. The live translate from the Samsung Galaxy AI features, which is going to be available from both these devices, is going to make your life so much more easier. And for those who are artists, right? For those who are artists, and you feel that you want your sketch to be digitalized, you want your sketch to be in a image format, all you have to do is use this AI as well. It's going to make sure that it doesn't miss out your minute of strokes which you have put on your uh, probably your painting or probably your sketching. Is going to make sure everything is caught perfectly by your camera and then uploaded in a digital form or converted into an image. So there are several things which this AI is going to make your life so much more simpler. Now, speaking about simpler things, we also have to speak about many other races which is going to be happening. As I said, sometimes it's important for you to keep things very simple for you to kind of cross over to win the trophy for yourself. चलिए, ज़्यादा समय यहाँ पर जो है अब लगाएँगे नहीं, और रुख करेंगे अपने एक और नए मुकाबले की तरफ, क्योंकि हम सब जानते हैं आका देखिए ऑलरेडी जो है ना मल्टीपल पीपल्स यहाँ पर, मतलब बहुत से लोग जाके रजिस्टर कर रहे हैं, और डेली हम लोगों को मल्टीपल अमाउंट ऑफ जो मैचेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ मैचेस विटनेस करने को मिल रहे हैं। तो आप लोग भी जाइए, क्या पता कल आप जो है वो खेलते हुए नजर आए, और हम लोग आपको यहाँ पर जो है कास्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सिंपली आपको स्कैन करना है इस क्यूआर पे, और आप जो है रजिस्टर यहाँ पर जो है कर लेंगे। बट अभी बात करी जाए कमाल के, यहाँ पर कुछ बूस्ट और ड्रिफ्ट्स यहाँ पर जो है लगातार विटनेस करने को मिल रही है। ओवरटेक करने की जो कोशिश है वो बेशुमार यहाँ पर तरीके से करी जा रही है, और सरफरोशी अपनी दिखाकर एक बार अब जो है क्रॉस तो कर दिया जाएगा। Absolutely. For now, it's going to be a perfect run, if you ask me. He's done great job when it comes to the turns. The nitros have been used perfectly. Into 2x nitros is what he could have used at one point of time. The takedown opportunity was also there. There it is. This is the 360 I keep speaking about for you to get that nitros. But you need to make sure that you use those nitros until you reach the next place of where you can actually fill that up. He's still got that shockwave. He's finished 82% of the race and will be falling very, very short. Too much of drifting is going to make sure that you do not cross the finish line at the given speculated time, and that is where it is going to be ending at 1 minute 9 seconds. He might have won the race amongst his friends, but you know, Sabrish has fallen way, way, way behind when it comes to being on the top with a timer of 1.9.6. सबरीश यहाँ पर जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनको कि थोड़ा सा और बेहतर करा जा सकता था, और टर्न्स यहाँ पे काफ़ी जरूर शानदार थे, बट वो अंतिम क्षणों तक एग्जीक्यूशन यहाँ पर उतना ज़्यादा जो ऑन पॉइंट है वो देखने को नहीं मिला। और हमने देखा है कई बार प्लेयर्स को ना स्टार्ट बहुत बेहतर करते हुए, बट वो मिड स्टेजेस में यहाँ पर, मिड रेस में यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी में यहाँ पर खुद को पाते हैं। रूट यहाँ पर जब लेन यहाँ पर भटक जाते हैं तो वो हल्का सा कुछ माइनस सेकेंड्स यहाँ पर जो इंक्रीज हो जाते हैं डेट्स उनके लैप टाइम में। और हमने कुछ प्लेयर्स को देखा है फिनिश अच्छे करते हुए तो वो स्टार्ट अच्छा नहीं करते, और जो परफेक्शन दिखाएगा मुझे लगता है वो 1 मिनट 3 सेकेंड का रिकॉर्ड तो मिनिमम यहाँ पर जो है वो तोड़ ही देगा, जो कि सेट करा गया है क्रूइस के यहाँ पर जो है द्वारा। बट काफ़ी ज़्यादा बखूबी तरीके से खेला गया, क्योंकि अल्टीमेट अपने आप में भी यहाँ पर जो अल्टीमेटली जो जीत है वो भी कम नहीं है इस समय। Absolutely, but I'm starting to lose hope, my friend Rusher. मुझे ऐसा लगने लगा कि
Hmm. might be the records are not going to be broken. Might be 1 minute 3 seconds is going to be the average. It's going to be the timer which most of these players are going to be, aiming at. The lesser than a minute is what I was expecting so far, but a little bit of a failure which I'm seeing from all these players. I'm starting to feel that it might not happen. But with this, ladies and gentlemen, you know what time it is. It's time for us to head into the next race. Without any further ado, we want to make sure we bring you more action all the way from the Phoenix Marketcity, Chennai. And if you guys are somewhere nearby, do not forget to come to this store. I know the store is not far away from the center of the city, so make sure that you're present over there. Match number 14 is underway from the phase 2. Phase 1 is already over, but phase 2 matches is going to be even more important and even more beautiful, as it's going to be new tracks, new racers, and a perfect start so far. The knockdown as well, which is going to be rewarding him with a little bit of nitros. देखिए बिल्कुल, और अगर बात कर ली जाए सो अभी जिस तरीके से शुरुआत एक बार फिर से करी गई है काफ़ी शानदार तरीके से, और लीजिए अभी तो एक परफेक्ट ट्रेंड काइंड ऑफ जो है विटनेस करने को मिल रहा है। बूस्टर्स का भी जो इस्तेमाल है वो करा जा रहा है, और धीमे धीमे करके ये शायद वो खिलाड़ी यहाँ पर बन सकता है जहाँ से चीज़ें आसान होने हो सकती हैं इनके लिए। क्या वो 1 मिनट का वो जो मार्कर है उससे पहले यहाँ पर ख़त्म कर पाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर बोला। उम्मीदें तो अब देखिए थोड़ी सी मेरी भी ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि जब इतने रेसर्स नहीं कर पाए तो किसी को कंप्लीट एक आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। और अभी तो जितनी भी रास्ते में जो अड़चने आई हैं इन्होंने सबको यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल मुँह ध्यान आगे जाते हुए नजर आ रहा है। क्या ये 1 मिनट? जी नहीं, इनको भी वो 1 मिनट 3 सेकेंड जो है लग जाएंगे। But it's going to be a new record coming in over here, ladies and gentlemen, from Sanjay. 1.3.3 was the previous record. He's going to be breaking it down with another 0.1 millisecond. So that's going to be a new record coming in from the side of Sanjay. 1.3.2. Yes, several places they did miss out a little bit of those boosters, but again, a little bit of expectations are slowly catching up, as Sanjay is going to be on the top of the board as far as what we have seen so far. देखिए बिल्कुल, संजय की अगर बात कर ली जाए ना तो इन्होंने यहाँ पर जो है बता दिया है कि चीज़ें यहाँ पर जो है अल्टीमेटली देखिए उतनी आसान यहाँ पर थी नहीं, बट जितनी बखूबी तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है कार्य यहाँ पर जो निभाया इस रेसिंग गेम में बहुत बखूबी तरीके से खेलते नजर आए। मुझे तो एक क्षण ऐसा लग भी रहा था कि शायद इस बार जो है 1 मिनट वाला वो जो रिकॉर्ड है उससे और नज़दीक यहाँ पर जा सकते थे। थोड़ा सा कोशिश यहाँ पर करी, बट वो 1 मिनट 3 सेकेंड और कुछ मिली सेकेंड्स इनको भी लगी गए। Absolutely, but those obstacles, right? How you get over through those obstacles. It's just that the initial from Sanjay was so perfect that he was able to catch up. The knockdowns gave him a little bit of boosters, which he used that initially. It's yes, there were a few shortcuts he could have taken with the kind of momentum he had eventually built up, but it's all learning phase for everyone, right? So as you said, a perfectionist is yet to come. We don't know whether he's going to come, whether he's going to showcase the talent, and push our adrenaline to its highest. But yes, ladies and gentlemen, you guys are watching the Samsung Pay Galaxy Cup. Play Galaxy Cup is going to be an initiative from Samsung where they're going to make sure that they give a small LAN event kind of an experience for those gamers who are interested to come and showcase their talent to their Samsung experience store. Now, what's going to be the advantage? They're going to be experiencing Samsung devices firsthand and also be a part of a small community which is growing up to support gamers. Yes, we're going to be also speaking about two devices from Samsung. One is going to be S24 FE as well as the Fold 6. देखिए बिल्कुल, और दोनों डिवाइसेस ऐसा लगता है ना कि इन दो डिवाइसेस के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि काफ़ी शानदार ये डिवाइसेस हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करी जाए पर्सनली काफ़ी बखूबी तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी बात कर ली, क्योंकि रे ट्रेसिंग की बात करी जाए, कूलिंग चैम्बर, जो कि कुछ यहाँ पर जो है कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमको दोनों ही डिवाइसेस में विटनेस करने को यहाँ पर मिलने वाली है। बट डिस्प्ले की जब बात आएगी तो मैं हल्का सा फोल्ड 6 की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव रखता हूँ, बट S24 FE उसकी भी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, और हम सब जानते हैं जो गेमर हैं उनको पसंद आती है अगर ज़्यादा बैटरी हो, लैग फ्री यहाँ पर जो डिवाइस हो, जहाँ पे गेमिंग FPS यहाँ पर जो बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो, एक क्रिस्टल क्लियर जो ग्राफिक्स हैं वो देखने को मिले, लाइक ऐसा लगे कि आप बिल्कुल PC में बैठ कर जो अपनी गेमिंग एंजॉय कर रहे हो। तो दोनों डिवाइसेस को जाकर चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। क्या पता किसी को ज़्यादा यहाँ पर S24 FE यहाँ पर पसंद है, किसी को Fold 6 पसंद है, वो आपकी एक अपनी प्रेफरेंसेस है।
And also the budgets, right? You can't expect everything to be in a smaller budget, but still it's worth the money. What S24 FE has bought in for the mid-range buyers, it's made sure it's give them everything required to have a luxurious device. Let it be the AI which comes in with that, the Galaxy AI which supports in so many ways, the live translation, noting down things, the chat assist, especially the chat assist. That's what I love the most. But after that, what's more important is there are several other features which I love: the battery, the vapor cooling system. Let it be any other aspect when it comes to gaming. Everything is absolutely covered by our S24 FE. The ray tracking, especially, is going to be my major concern. Because it's helped us a lot in catching up when it comes to the graphics. But with this, ladies and gentlemen, we'll be heading into the next race, and after which we're going to be giving you a complete insight on all the devices out there. देखिए बिल्कुल, और अब एक नए मुकाबले की शुरुआत। डिवाइसेस के बारे में तो देखिए चर्चा जो अपनी जारी रखेंगे, बट उसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से अपनी जनता को रिमाइंड करा देना चाहूँगा या बताना चाहूँगा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा, जाके रजिस्टर करिए, जिसके चलते आप कल हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। सैमसंग स्टोर्स पर जाइए, डिवाइसेस को भी चेकआउट करिए और इस रेसिंग में यहाँ पर जो आप एक रेसर बन के पार्टिसिपेट करिए और दिखाइए अपना जौहर, अपना जो स्किल सेट है कि आप कितनी बखूबी तरीके से रेस करना है यहाँ पर जो है जानते हैं। ज़िंदगी की रेस में तो देखिए सभी दौड़ रहे हैं, बट एक बार इस रेसिंग गेम में भी यहाँ पर जो है उतरिए। बट अभी मुकाबले की अगर बात करी जाए, काफ़ी शानदार ड्रिफ्ट्स और यहाँ पर जो है उसके साथ साथ बूस्टर्स का भी बहुत बखूबी तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर लगातार करा जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है लैप टाइम, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर लैप टाइम में यहाँ पर जो है रेस को फिनिश करा जाए। He's got to catch up a lot more. 76% distance has been covered. 52 seconds is what he's got on his hand. He should have already crossed this wooden bridge, but due to the obstacles in front of him, he might fall a little bit shorter. Uses those nitros 1.2, 1.3 seconds and will be falling short by just 1 minute and 1 second and 1 millisecond. Now Sundar has done a great job when it comes to his racing skills, and he tried to do his best. There were several places where he collided, several places where he could have taken those shortcuts, but a very good run. He won the race amongst his lot, but his lap time, is it good enough to put him on the leaderboards, is something which we'll have to wait and watch as time reveals everything, my friend. ये बिल्कुल सुंदर का एक अति सुंदर जो प्रदर्शन है वो हमको जो है देखने को मिला, बट वो उतना बेहतर नहीं था जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्लेयर्स ने जो बेंचमार्क्स है वो सेट यहाँ पर चेक कर रखे हैं। बट अभी तो देखिए हमने बात करी कि और भी काफ़ी ज़्यादा जो रेसेस है हमको और भी ज़्यादा जो विटनेस करने का मौका मिलेगा, तो क्या पता वहाँ से कुछ और उभरते हुए जो प्लेयर्स है वो देखने को मिले जो कि सही तरीके से एक परफेक्शन यहाँ पर जो है दिखाते नजर आ सकते। Absolutely. But again, when it comes to perfection, you're speaking about perfection, you need to speak about two devices which Samsung has bought in. One is going to be the S24 FE. Now, this is going to be a very beautiful device for the gamers, and let me tell you why. Three main features have been covered in this. One is going to be the battery life. For every gamer, if he has to become a professional player, he needs to grind for longer hours. For longer hours, you need better battery, and that's why you've got a very large 4700 mAh battery, which allows you to continue your grind and is not going to stop you from being that professional player. The second most important thing is going to be the vapor cooling system which this device has bought in. Now, vapor cooling system is going to be a new technology which makes sure that while you're grinding, there's no frame drops, there's no lags, because your device is not heating anymore, and it's making sure that your devices are as cool as a cucumber. Now, with all these 2 points already ticked off, one is going to be an additional feature which you would love as a gamer. That is the ray tracking. For those gamers who are playing out there, they need to have completely high graphics to understand the pixels of the opponents when it comes to battle royale games, and also when it comes to the racing games to understand the curves of every race. Now, that is where ray tracking comes into existence. It's a PC like realistic graphics which is given in your devices to make sure that you have the best of gaming experiences. And with all of this, additionally, you're going to get all Galaxy features: the generative AI, the sketch to image, the live translate, note assist, chat assist. If I keep speaking, I'm going to go on, ladies and gentlemen. I'm going to stop here.
making sure that you guys have an opportunity to have these devices experience firsthand. All you have to do is head on to the Samsung experience stores nearby. My friend is going to be giving you a list of those places. If you are present in any of these cities, let it be Gurgaon, Delhi, Noida, Dehradun, Lucknow, Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, there are several stores which are going to be coming in, and after which he's going to be telling you guys the important features of Fold 6 which makes it so special to his heart. देखिए, बिल्कुल। और अगर बात करी जाए, आपने बताया कि यहाँ पर कूलिंग के साथ-साथ यहाँ पर जो है बैटरी वगैरह भी काफ़ी बेहतर है, बट इन सब के दौरान ना हम लोग जब पहले यहाँ पर जाते हैं, तो किसी भी स्टोर में जब किसी डिवाइस को यहाँ पर चेक करते हैं, तो एक कैमरा वगैरह भी यहाँ पर चेकआउट करा जाता है। वो सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शानदार तो हैं, बट उसी के साथ-साथ अगर बात करी जाए, तो डिस्प्ले जब आप किसी भी यहाँ पर जो वीडियो को प्ले करते हो, वो क्वालिटी यहाँ पर कैसी है? क्योंकि वो एमोलेड यहाँ पर जो डिस्प्ले आती है ना, वो एक अलग तरीके से, एक अलग चरित्र यहाँ पर बयाँ करती है Exactly. किसी भी वीडियो का, किसी भी यहाँ पर पिक्चर का, या फिर किसी भी गेमिंग यहाँ पर जो आप गेम यहाँ पर खेल रहे हो। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार, वो एमोलेड है, और सैमसंग जाना भी जाता है देखिए अपनी डिस्प्लेस के लिए, टू बी ऑनेस्ट। और काफ़ी बखूबी तरीके से दोनों डिवाइसेस को यहाँ पर जो है बनाया यहाँ पर गया है। तो आप जाओ यहाँ पर चेकआउट करो, ज़्यादा समय यहाँ पर ना व्यर्थ करो, और मेक श्योर करो कि आप आज रजिस्टर करो, कल जा रहे हो डिवाइस देखने, तो हमारे साथ-साथ जो है इस गेमिंग या में एक छोटा-सा जो है पार्टिसिपेट भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है एक रेस कंप्लीट करने में। Absolutely, but at the same time, ladies and gentlemen, if you're around Gurgaon, all you have to do is head on to the Spectre and Star Convention Limited at Dream Mall. 2 days of event for you guys. The Project Private Limited is going to be also taking place at Delhi. Make sure that you go over there. DLF Mall of India at Noida is going to be one of the other places. If you're very close to Noida, and for people from Dehradun as well, Old Connaught Palace is where you'll have to head to. Rora Enterprises is the exact place where the events is taking place. Lulu Mall at Lucknow is going to be one of the other places if you guys are around Lucknow. For the Mumbai lovers, Lower Parel at the retail shop is where you're going to be getting yourself some experience. So these are the places where you have the Samsung experience stores. Before I speak further, I also have to speak about the other lovely device which Samsung has bought in, and that's going to be the Fold 6. This is the most favorite device for me so far. The reason being, Yeah. I love to experience everything on a bigger screen, and in my day-to-day life, I need something compact, and that is where the Fold is an absolute beast. Whenever I need to experience a bigger screen, all I have to do is just open the Fold, and I have a mini tablet in my hand. And many people have been asking me this. With so much of big screen and all those things, you need to have a good processor, a good RAM, all the features needs to be good, and all of this has to be in a good budget. Let me tell you guys, you're going to be awestruck with what all I'm going to be telling from here on. The processor is a powerful 8 Gen 3, which is the latest processor, which is good enough for you to stream as well as game on your device itself. With this, you're going to be getting a 12 GB RAM, ladies and gentlemen. 12 GB RAM, a big number, which is going to make sure that your device never lags in what situation and what game it's going to be put in. After this, again, the ray tracking, which I've been speaking about, is going to make sure that your device has a PC realistic graphics. A best gaming experience you can ever get is also present in this device. The vapor cooling chamber is also present over here, but rather it's going to be 1.6x bigger than that of an S24 FE. Obviously a Fold, right? And it needs a bigger vapor cooling system, and that is where Samsung has also ticked that box perfectly. Now, with all of this, an additional thing which I love about this device is the 120 hertz refresh rate with Dynamics 2x AMOLED display. Now, this is going to make sure that everything runs smooth on your device, and every shot you take or every curve you want to go to, the gaming device is just going to support you in every single way. I know I've been speaking a lot, and my co-caster is just waiting for me to say that, "Bhai, kitna baat karega tu?" But the features are so good, bro. I just can't stop speaking, Rush. But I know that the next game is coming up soon, and I'm gonna allow you to take it from here. देखिए, बिल्कुल, चलिए अब मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर जो है करते हैं, और ज़्यादा समय यहाँ पर जो है लगाएँगे भी नहीं हमारे जो, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं। जो रेसर्स हैं वो बिल्कुल तैयार है एक बार फिर से अपना लोहा यहाँ पर देखिए मनवाने के लिए। बट चलिए, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक क्यूआर दिख रहा होगा पॉपअप करते हुए, तो स्क्रीन पे
आप रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली यहाँ पे स्कैन कर लीजिए उस क्यूआर को। बट चलिए ड्रिफ्ट्स की अगर बात कर लीजिए, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट रन यहाँ पर अल्टीमेटली जो है विटनेस करने को यहाँ पर जो है मिल रहा है। लगातार कुछ शानदार ड्रिफ्ट्स विटनेस करने को यहाँ पर जो है मिलेंगे, बट स्टिल 70% डिस्टेंस इनको यहाँ पर जो है कवर करना है। और 30 सेकेंड ऑलरेडी यहाँ पर जो जाया है वो कर दिए गए हैं। लगातार कुछ लैप यहाँ पर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करी जा रही है, कम से कम इस लैप टाइम में कोशिश है। एक शानदार यहाँ पर जो रन ऑफ फॉर्म में यहाँ पर ये प्लेयर, क्या लगता है 1 मिनट के अंदर कार्य कंप्लीट हो पाएगा? अभी तो मुझे थोड़ा सा आरका मुश्किल ही लग रहा है। Absolutely, but at the same time, I believe that this race is still not done. He's got 2 nitros to pick up on the way. All he has to do is do a 360, misses out on the first one. The obstacle on the wooden bridge is going to hinder his performance a bit more. He has 2 more seconds to catch up, but will be falling short for not using the nitros at the right time. But still has a decent time of 1 minute 5.2 seconds. And from here on, Kanaga is going to be regretting a little bit, but he's going to be happy he won that race. बिल्कुल, देखिए खुश होंगे, लेकिन जब वो एक लीडर बोर्ड निकल कर आएंगे ना, जिसने कितने कम यहाँ पर जो लैप टाइम में यहाँ पर जो है रेस कंप्लीट करी, बहुतों से ऊपर होंगे बट सबसे ऊपर नहीं होंगे। ये बात इनको खुद को भी पता है कि और बेहतर तरीके से चीज़ें जो है एग्जीक्यूट यहाँ पर जो है करी जा सकती हैं, क्योंकि इस सैमसंग प्ले गैलेक्सी कप में ना आपको हर एक चीज़ पे यहाँ पर जो है, चाहे रेसिंग्स पे यहाँ पर जो है बात करी जाए, बहुत सही तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें अपने जो स्किल सेट है वो एग्जीक्यूट यहाँ पर जो है करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर आप खाली यहाँ पर जो है लुत्फ उठा सकते हैं, वो हमारे सैमसंग स्टोर्स में जाकर डिवाइसेस को यहाँ पर जो है चेकआउट करके आप लुत्फ उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भाई, एक बार जब आप देखने भी जाओगे तो मुझे लगता है वो डिवाइसेस है इतने यहाँ पर सुंदर, इतने यहाँ पर बेहतरीन स्पेसिफिकेशन से कि वो मन जो है ना वो बहल ही जाएगा खुद में। चलिए अगर बात कर ली जाए तो देखा जाए कनागा के द्वारा एक अच्छा परफॉर्मेंस विटनेस करने को यहाँ पर देखिए मिला जरूर है का। और अब इंतज़ार यही रहेगा कि अगली रेस कब यहाँ पर जो है शुरू होती नजर आएगी, क्योंकि ये रेसर्स ऐसा लग रहा है कि मैच बाय मैच और बेहतर करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो तो कर रहे हैं। Absolutely. Every single race is turning out to be a bit more closer than the other. Yes, in between we are able to see some phenomenal performance trying to put up a new record altogether. Yes, for now we are able to see 1 minute 3 seconds and 0.3 is going to be the record which has been holding on the top. I'm waiting to see who else can come and actually break this barrier, because within the 1 minute marker is where I'm expecting few people to end. It's an easy track if you ask me in comparison. All you have to do is avoid those collisions, stay away from the other racers, try to pick up a track where they're not going to disturb you much, take that initial lead and make sure that you capitalize. So these are the few things which I would love to see from the players out there. But for people who are wondering where these races are taking place, it's taking place right in your cities, as it's a mini LAN event kind of thing. All you have to do is head on to the Samsung Experience Store. Like one right now is from the Phoenix Marketcity, Chennai, from where we are casting all these games. देखिए बिल्कुल, और उसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, आप अगर कहीं मुंबई पे या फिर पुणे पे, हैदराबाद पे यहाँ पर रहते हो तो आप भी जाकर अपने यहाँ पर जो नीडेस्ट सैमसंग स्टोर्स में यहाँ पर जो अल्टीमेटली जो है चेकआउट कर सकते हैं। बट बहुत ही जल्द रुक करेंगे अपने एक और नए मुकाबले की तरफ। और उससे पहले ऐसे अगर आप लोग देखिए पहली बार जुड़ रहे हैं यहाँ पर, जो रजिस्टर करना मैं बोलना चाहूँगा अगेन अगेन मत भूलिएगा, क्योंकि कल के दिन भी आपको उन्हीं स्टोर्स पे जो एक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपने आज अगर आपने मिस आउट करी अपॉर्चुनिटी तो मेक श्योर करिए कि अभी रजिस्टर करिए और कल मिस ना करें। Absolutely, uses a 360 to build up his nitros, and this is the kind of gameplay you need to have for yourself. Immediately get those nitros. Now a great opportunity for him to double tap and make sure he uses it to take down players. Knockdown using a shockwave. There the shockwave comes in, but a player is just going to be knocked out at the nth moment. I was expecting him to knock the people out a little bit earlier, but this early lead is going to allow him to breathe a little bit better. Small shortcut which has been taken over here, and he's made sure that he uses it to his fullest potential. Another nitros has been picked up. He uses it immediately, even before he gets an opportunity on a straighter turns.
The curves are going to be so much more important. A BMW, yes, is very good when it comes to those curves, and it's not going to drop when it comes to the speed. But what additionally you need to do is pick up those nitros, or else you're going to be falling short. By the bridge, he's already covered up with 1 minute. All he's got to do is cover the rest of the track within a second, but misses it out. A little bit of hesitation when it comes to his booster at the final moments of the race is going to drop him down. Rakesh by 1 minute 5 seconds, 0.379. तो देखिए कोशिश बेहतर थी यहाँ पर जो है, काफ़ी बखूबी तरीके से जो है राकेश खेलते नजर आए, लेकिन अंत में जो एक टारगेट अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं वो अचीव यहाँ पर जो है नहीं कर सके। जरूर यहाँ पर जो रेस विन कर ली, बट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आज के दिन जो रेसर है वो नहीं बन सकेंगे। और जैसे कि आपने मेंशन भी करा कि जब आप पिछले यहाँ पर कुछ रेसिंग यहाँ पर जो है रेसर्स को यहाँ पर जो है देख रहे थे हाल ही फिलहाल दिनों में, तो उधर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स सेटअप यहाँ पर जो है करे गए। बट अगर ध्यान दे दिया जाए तो अभी तो आज 1 मिनट 3 सेकंड का ही यहाँ पर जो रिकॉर्ड है। बट लेट्स सी अब आगे आने वाले मैचेस में क्या उन रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पर जो है तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब खिलाड़ी जो है बहुत से जो प्लेयर शुरुआत करते हैं ऐसा लगता है कि हाँ शायद इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाए, बट जाते जाते ना वो 1-2 सेकंड जो है ऊपर हो ही जा रहे हैं। Absolutely, but I feel that it's just that the hesitation, the pressure under which they come in when they understand the race is going to come to an end. They look at the timer and they're like, you know what, I need to pick up a booster. I need to hit up the nitros. And few people tend to do it at a little bit of a pressure and then lose out that greater opportunity of trying to finish the race with a double booster. So these are the few small things which the players need to tick off and make sure that they are perfect when it comes to the further moments of the races. देखिए बिल्कुल, और परफेक्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना प्लेयर्स थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो गलती यहाँ पर जो है कर देते हैं, बट हमारे डिवाइसेस बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हैं। तो आप लोग जाकर जो है जल्दी जल्दी चेकआउट कर सकते हैं। बट चलिए रुक करेंगे अपने एक और मुकाबले की तरफ और देखते हैं कि इस बार वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो कि कितने मिनट्स में यहाँ पर बेसिकली कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा, रेस को कितने सेकेंड्स में इवन या फिर जो है कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। Absolutely. 18th match, ladies and gentlemen, in this phase two, all the way from Phoenix, Marketcity, Chennai. And we're able to see a takedown and a perfect nitros being used at the beginning itself. That gives him a lot of lead in comparison to the other contenders so far. He's picked up another one. His nitros is almost fully uses it. A shortcut is going to be missed out over here. Going above the ramps would have been so much more better. Drifts are missing out. And somewhere I feel with these small mistakes being done on the way, he might end up within the 1 minute 5 second mark. Now let's see whether he's going to prove us wrong, as another nitros has been picked up. It's a perfect run so far. He uses this 360 turns. Oh my god, a double barrel to build up the nitros, and he's going to be catching up the time as well. A good start for him. He's going to be continuing the nitros to make up to the lost time. A perfect roll so far. He's going to be using the shortcut this time around, destroying the obstacles, and again going ahead with another nitros picked up over here. Is he going to finish within the 1.3 marker? The chances are very high. He's still got a little bit of a booster left. 1 minute 2 seconds, 1 minute 3 seconds, and still falls short. I guess it's because of that initial loss of time which he had and the little bit of an obstruction in between. Sharp, a good try, kept us at the edge of our seats, but still failed by 1.4 minutes. 1.4 seconds, sorry. या तो ये बिल्कुल 1 पॉइंट यहाँ पर जो है 4 सेकेंड्स, 1 मिनट 4 सेकेंड्स में यहाँ पर बोला जाए। काफ़ी बखूबी तरीके से ऐसा लगा कि इन्होंने यहाँ पर जो शुरुआत है वो करी, बट अल्टीमेटली बात वही है कि चीज़ें उनके हित में यहाँ पर उनके तरीके से यहाँ पर चली नहीं इन दी एंड तक। बट देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से अब आगे आने वाले जो रेसर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट्स करते हुए नजर आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी बखूबी तरीके से खेल रहे हैं, अगर ये और किसी डिवाइस में खेलें तो इतना भी यहाँ पर जो समय इससे भी कई गुना ज़्यादा समय लग सकता है। बट बिकॉज ऑफ सैमसंग डिवाइसेस अगर बात करी जाए, इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है रेस को आसानी से यहाँ पर कंप्लीट करते हुए में विद इन ए टाइम्स, यहाँ पर विद इन ए सेकेंड्स, विद इन अ मिनट अगर बात कर ली जाए, क्योंकि एक क्रिस्टल क्लियर इमेज यहाँ पर आपको विटनेस करने को मिलेगी। एमोलेड डिस्प्लेज है यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, कमाल का यहाँ पर जो एक कूलिंग भी यहाँ पर देखने को मिले, एक प्रॉपर FPS आपको जो डिवाइस में है वो मिलते हैं जब भी आप किसी भी गेम को एंजॉय करते हैं।
Absolutely, absolutely. And with this, ladies and gentlemen, if you guys want to experience something similar, all you have to do is head on to the nearest Samsung Experience store, and there you have an opportunity to showcase your talent in gaming. All you have to do is click on the link below. There's a registration link in our description. Make sure you click on it, register yourself, giving you a small notification, and also where the events are taking place. For those who are watching from home, we have been trying to give you guys the name of places which are nearby, and also making sure that you guys go and experience the two Hero devices coming in from the side of Samsung. But for those who are new, do not forget to share it among your friends. For those who are watching, I've been doing that lately, being a really good audience. But if you guys love something about these two devices, let it be the Fold 6 or let it be the S24 FE, let us know in the comment section below, in the chat below, and we'll make sure to read it out if we feel that yes, this person has been keen and understanding every bit of it. देखिए बिल्कुल लगातार यहाँ पर जो लाइव चैट में भी आप लोग जो देखिए बता सकते हैं, और साथ ही साथ जाइए भाई सैमसंग स्टोर्स पे भी यहाँ पर जो है जाकर चेकआउट करिए, रजिस्टर करके जाइए। आप जब उधर पहुँचे डिवाइसेस के साथ साथ डिवाइसेस का यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन करने से अच्छा, मुआयना यहाँ पर लेने से अच्छा आप हमारे साथ वहाँ पे आकर जो है क्यूरेसिंग यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट भी करिए, क्योंकि देखिए जो देखने में फील है वो कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा जो फील आएगी वो खेलने में आएगी, जब आपको उन प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर जो डिवाइसेस पे अपना जो हाथ वो रखोगे, बूस्ट वगैरह के साथ डबल टैप एंड ऑल यहाँ पर करते रह जाएंगे। बट सैम की अगर बात करी जाए, इन्होंने अपना पिछला मुकाबला तो देखिए काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने अपने नाम यहाँ पर जो कर लिया, बट अब बारी है एक और नए मुकाबले की। सो लेट्स सी, देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो चीज़ें वो चलती हैं, क्योंकि मुकाबले की शुरुआत अब बहुत ही जल्द होने वाली है। Oh yes, the next race, ladies and gentlemen, all the way from the Phoenix Marketcity, Chennai. It's going to be match number 19, and it seems like the racer knows exactly what to do. Uses a drift a little bit to make sure that he gets himself a bit of a nitros to tackle around with these people trying to put him down. Uses it just before picking up another one so that he can continue to boost himself and make sure the distance between him and the second place keeps increasing. Another drift opportunity over here, doesn't do so, wants to stick to the center of the track, making sure that he has control of over the race, gets a nitro in reward, and immediately uses it to catch up to the next one right in front of him. Again, still sticking to the center, as a perfect run so far. देखिए बिल्कुल शुरुआत काफ़ी यहाँ पर अच्छी हो चुकी है, एंड ऑलरेडी आपने जो है 62% जो है डिस्टेंस जो है कवर यहाँ पर कर लिया है। बट बात वही है कि अब अंतिम ना वो 12 सेकंड बचे हैं, तो वो 1 मिनट वाली होप तो भाई जैसे जैसे देखिए मैचेस बीतते नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फेज 2 में ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि इतनी आसानी से आप जो 1 मिनट के अंदर जो है मतलब जो है कंप्लीट लैब अपना कंप्लीट कर पाएंगे। बट क्या 1 मिनट 3 जी नहीं, वो पहुँचते पहुँचते 1 मिनट 5 सेकेंड्स यहाँ पर जो है लग ही जाएंगे अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वेंकटेश को। Absolutely, but 1 minute 5 seconds and 322 milliseconds. Venkatesh had done a great job in the beginning. He had got that initial boost. As I said, there are several places where you'll have to do a 360 to catch up to the boosters, and also get yourself some nitros as well. And if he had done that and then used it as a shockwave to catch up to the lost time, probably it would have been so much more easier for him. This is all happening at our Samsung Experience store, ladies and gentlemen. If you guys are watching this, do head on to the nearest Samsung Experience store. We have been reading out few names for you. We'll make sure to put down some more. Let it be Noida, let it be Mumbai, let it be Hyderabad, let it be Bengaluru. Each of these places is where the Experience store exists. So we're going to be reading out a few for you in the stream. So before that, share it among your friends so that they can all come in over here and go with you to get it. Go with you to experience one of these Samsung Experience. देखिए बिल्कुल, और जल्दी जल्दी जाइए भाई, चेकआउट यहाँ पर करिए। जैसे कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर आकर ने आपको सभी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर जो है बता दी है कि आप किन किन जगहों पर जा सकते हैं। आप कहीं पे भी, अगर इवन आप लखनऊ में भी हैं तो लुलु मॉल में आपको जो है ना वो सैमसंग शूज़ देखने को जो है मिल जाएंगे। और 23-24 के तारीख को अगर आप जाते हैं तो आप पार्टिसिपेट भी यहाँ पर कर सकते हैं गिविंग एंड ऑल में। सो फटाफट से जाओ, चेकआउट यहाँ पर जो है करो, ज़्यादा समय यहाँ पर जो व्यर्थ है वो करा ना जाए तो बेहतर रहेगा। अब मुकाबले की शुरुआत बहुत ही जल्द खैर देखिए शुरू होती नजर आएगी। एक नया मुकाबला, एक नया रुख लेकर उतरेगा। बट लेट्स सी, जिन प्लेयर्स ने यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक
परफॉर्मेंसेस के साथ में जो ग्राफ है वो अप कर रखा है, क्या उनको कोई बीट यहाँ पर करता ना चाहेगा? 1 मिनट 3 सेकंड से आप सोचिए, अगर कोई और माइनर सेकंड से अगर रिकॉर्ड अपने नाम बना दे तो वो कितना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि लग नहीं रहा है। मल्टीपल टाइम्स यही दिखा है कि 1 मिनट 4 सेकंड और 1 मिनट 5 सेकंड तो लग ही रहे हैं। I mean, I still feel that there's an opportunity. I still feel that there is an opening. Somebody has to step up. And I don't know when they're going to be stepping up. I don't know who's going to be that lucky winner who's going to put his hands on being the champion of the Play Galaxy Cup. Because this is an initiative which is so much more crucial for people to understand the importance of having a device as well. But with this, ladies and gentlemen, I believe that we'll also be stepping into the next few games of the day, and somewhere I feel that the player is ready. Yes, match number 20 underway. This is happening all the way from the Phoenix Marketcity, Chennai, and I do believe this time, for the last time at least, I'm going to keep my hopes high. Immediately he's going to be using those boosters to make sure that he catches up to the first position. But is he got enough? The airtime is again going to give him a little bit of a chance. He can also go in for a shortcut over here. After this rotation is where he can head up to the shortcut. Yes, he goes in over there, uses those ramps to cross over. He's got a very good head start, 20 seconds in, and he's already got really good boosters. Yes, the obstacle is going to just make sure that it decreases a little bit of his time, but he's going to continue maintaining his shortcut path. देखिए बिल्कुल, और अगर बात कर ली जाए तो एक शानदार यहाँ पर जो है रोल देखने को मिलेगा, और एक शॉर्टकट यहाँ पर अपना तो लिया, बट इन शॉर्टकट्स के साथ क्या इनके समय में यहाँ पर थोड़ा सा जो है कट यहाँ पर होता नजर आएगा, क्योंकि 50 सेकंड तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं, और स्टिल ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा जो सफ़र है वो तय करना है। 86% चलिए आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्या ये 1 मिनट 3 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? जी हाँ, लग तो अभी कुछ ऐसा ही रहा है, और जी हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हुआ का तो एक सबसे ज्यादा कम समय पे अक्षित अभी तक के यहाँ पर आज के रेसेस में यहाँ पर जो रेस है वो सबसे जल्दी कंप्लीट करते नजर आएंगे। Absolutely. Akshit has done a great job over here. 1 minute 3.2 seconds is going to be the new record, right? And everything is coming down to the line. It's just that the point 1 seconds. I would rather say, 0.1 second or 0.1 millisecond to be specific is the time where everybody are falling short. So this is what happens in a racing game. You need to make sure that you're being at the tip of your toes. You know exactly what you're doing. The first contender itself had put so much of pressure, and it seems like Akshit is just going to tank his stars. My expectation again is going to be coming back high when it comes to the next set of races. Yes, Akshit is going to have a very good lap time, but there's some more matches to go and some more records to be broken. देखिए बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर रहेगी कि अब अक्षित ने जिस तरीके से खेला है ना, वो वापस से थोड़ी सी हम लोगों की भी जो उम्मीदें हैं वो जगा दी कि हाँ अभी भी वो 1 मिनट वाला जो हम लोग यहाँ पर जो एक समय लेकर चल रहे हैं वहां पे टच करा जा सकता है। बट इन्होंने देखिए शॉर्टकट भी लिया काफी बखूबी तरीके से, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा यहाँ पर जो लड़खड़ाते नजर आए। बूस्टर्स का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा, वो एंड गेम में भी बहुत बखूबी तरीके से अपना जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया, बट तब भी कहीं ना कहीं वो 1 मिनट 3 सेकेंड्स और कुछ मिली सेकेंड्स उनको जो है लगी गया। Absolutely. There was one crash by the wall when he finished the barrel and he had to take the control, the line center. That is where he went a little off track, lost around 1 to 2 seconds. And then after that, the final moment where there are two boosters which comes in, or the two nitros which shows over there, a 360 over there to collect both of it, is somewhere he missed. And these two places is where the only mistakes I believe was done over here from this man. But Akshit has done a decent job, if you ask me. From here on, he can, if given another chance, can come up to not do those mistakes, because a double barrel roll was unnecessary, or triple barrel roll. Probably one or two to put up the boosters and again stick to the line would have been so much more better. Sometimes if you do something way too much, it is also a little bit of a problem when it comes to racing games. देखिए बिल्कुल, जब आप सोचते हो ना कि कुछ कंप्लीटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सही यहाँ पर जो है कर दिया जाए, तो फिर थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है चीज़ें जो है इधर उधर भी यहाँ पर आपके लिए कभी कभार खैर देखिए यहाँ पर हो जाती हैं। बट एट दिस यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग तो देखिए साथ में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं, मुकाबलों को यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं। बट जनता, अगर आप भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस रेसिंग में, यहाँ पर इन डिवाइसेस में एक बार अपना जो हाथ है वो आजमाना चाहते हो कि भाई कितनी यहाँ पर तारीफ
तारीफ तो देखिए करी जा रही है, आप लोगों को एक बार फर्ज भी बनता है जाकर चेकआउट करिए अपने यहाँ पर जो है करीबी यहाँ पर सैमसंग स्टोर्स में, यहाँ पर जो है जाकर और हमारे साथ जुड़िए, रजिस्टर करके जाइए वहाँ पे, रेस के लिए एंजॉय करिए। और थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल्स आप जब जाएंगे सैमसंग स्टोर्स में तो आपको पता लग जाएगा। Absolutely. With this, ladies and gentlemen, we'll be taking a short break and make sure that we give you a little bit of a breather so that you can share it among your friends, amongst which we'll be trying to, group in the next set of racers. We're going to be set up and ready. Yes, see you guys on the other side and very, very soon.
Welcome back, ladies and gentlemen. You guys are watching the Samsung Play Galaxy Cup. With me on the desk is again Russia Cast. Russia, I guess it's time for us to declare that the average is going to be 1.3, right? A minute and 3 seconds. And I believe even if somebody goes faster than that, probably we'll be able to say a 1.2 maximum. I don't think so. It's going to be easy for anybody to decrease that 1 minute marker. But one thing which you guys do not need to decrease when it comes to a device is the expectations you have for a good high-end device. That's going to be Fold 6. It's going to meet every bit of your expectation. And favorite feature, Rusher, of Fold 6 for you? लाइक देखिए हम लोगों ने बात करी भी कि एक फेवरेट फीचर एक गेमर के लिए वही हो सकता है कि लैग यहाँ पर जो है ना करे, बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग यहाँ पर जो देखने को मिले, कैमुलेट डिस्प्ले भी है Yeah. जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से गेम्स को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पिक्सल्स आपको जो है क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे। और प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि गेमिंग के साथ साथ प्रोसेसर हमने देखा बहुत ज़्यादा जो क्रूशल है वो रहता है हीट वगैरह यहाँ पर कम करने में, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मदद करता है। साथ में देखिए और भी बहुत अनेक से फीचर्स हैं, अगर वो गिनाने यहाँ पर अगर हम लोग बैठ गए तो फिर मुझे लगता है वो रेसिंग गेम कम यहाँ पर जो रहेगा और ऐसा लगेगा कि स्पेसिफिकेशंस ही बता रहे हैं, क्योंकि मोबाइल है बहुत ज़्यादा यहाँ पर शानदार। दोनों ही डिवाइसेस इनफैक्ट मैं बोलूँगा फोल्ड 6 भी काफ़ी बेहतरीन है। Absolutely. For me, it has to be the ray tracking which is present on both these devices, which is going to make sure that you have a PC kind of a graphic experience on your mobile and make sure that you have the best gaming experience. But with this, ladies and gentlemen, need to get back to the store at Phoenix Marketcity, Chennai, because there's going to be another racer ready to showcase his talent in the asphalt game. And I do believe this time around that 1.3.2 can be broken by 1.3.1, because keeping small expectations, I do believe that gamers can do wonders over here. Good start if you ask me, immediately taking those boosters, but if you had done a 360 could have taken down a player. But so far no loss whatsoever. देखिए बिल्कुल सोफा यहाँ पर जो है ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं है। और अब अगर बात कर ली जाए सो क्या शॉर्टकट यहाँ पर जो लेंगे, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि नॉकडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं अपने यहाँ पर जो विपरीत यहाँ पर जो है बैठे यहाँ पर जो और भी रेसर्स को यहाँ पर कंप्लीटली ड्रिफ्ट वगैरह काफ़ी शानदार तरीके से एक व्हीकल कंट्रोल बहुत बेहतर मैं बोलना चाहूँगा विटनेस करने को अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है। बट कैसे अगर आप लोग भी यहाँ पर जो है खेलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो कल के दिन भी आपको जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा अपने सैमसंग यहाँ पर जो है स्टोर्स में यहाँ पर चले जाइए। ऑलरेडी हम लोग जो प्लीज़ यहाँ पर किन किन जगहों में ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी सिटीज़ पर है, बट उसमें भी उन जगहों पे यहाँ पर मौजूद है, तो फटाफट से जाओ भाई चेकआउट यहाँ पर करो। बट अंतिम यहाँ पर जो है कुछ 8 सेकेंड्स में क्या ये रेस कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि 84% ऑलरेडी यहाँ पर जो वर्क है वो कंफर्म यहाँ पर हो चुका है, पक्का यहाँ पर कर दिया जा चुका है। बट वो समय लगेगा ही लगेगा आकर, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर आप बहुत बेहतर खेलते हो तो आप 1 मिनट 2 सेकंड में यहाँ पर जो अपना लैप टाइम है वो कंप्लीट कर सकते हो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 1 मिनट 5 सेकेंड्स और यहाँ पर उसके बाद कुछ मिली सेकेंड्स भी लग गए देव को इस लैप में, इस रेस को कंप्लीट करने में। So many obstacles, so many way he collided with the others. Yes, taking down an opponent is going to give you that boost and you can catch up to the lost time, but sometimes if you collide to the sides of the track, it's going to be hard for you to regain your top speed. It's all about consistently maintaining your car at the top speed to find that average point, and I do believe that there are only few who have cracked this code perfectly. Now with this, ladies and gentlemen, the match stats clearly for Dev: 1 minute 5.876 all the way from Phoenix Marketcity. He's playing the Samsung Play Galaxy Cup. If you guys want to be a part of this event, all you have to do is click on the link in the description below. It's going to follow up for small steps, and once you complete those steps, you will be able to get yourself an opportunity to come into one of our Samsung Experience Store and showcase your talent as well. चलिए इसी दौरान यहाँ पर जो रुक करेंगे अपने एक नए मुकाबले की तरफ, और ज़्यादा समय जो वो व्यर्थ यहाँ पर जो करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर जो रेसर्स जो है हमारे रेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो मोराल है उनका जो है बूस्टअप यहाँ पर हो रखा है। बट देखते हैं अभी ये जो मैच नंबर 22 यार का, ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है 2-3 मैचेस यहाँ पर करे थे काश, बट जी नहीं 20 सेकेंड यहाँ पर जो मैच की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। उस समय का पता लग नहीं रहा है क्योंकि ये सैमसंग के यहाँ पर डिवाइसेस वो चर्चा उसमें यहाँ पर करते करते इतनी स्पेसिफिकेशंस है, इतने बेहतरीन वो डिवाइसेस है, कब समय बीत गया पता भी नहीं लगा।
Absolutely. Now look at how he's going to be boosting those nitros as well, making sure that he uses the right lines when it comes to the race. Everything needs to be going perfect for this player. Every time he uses a booster, he makes sure that every time he uses a drift, he makes sure that his nitros are full, recharged, and then he goes in forward. Knocks out. That is also going to be rewarding him a lot. Now a barrel roll comes in, a double barrel roll basically, but after which he chooses a perfect shortcut over here, and this was the kind of race I was looking for. Again, a 360 comes in. He's got 49 seconds already on the clock. Most of those places is where he's lost time, but can he catch up? Can he create history over here? I do believe he's going to fail really hard. 59 seconds already done. 1 minute. Yes, there was a chance for him to catch up to the lost time, but the drifts also delays it, also puts down your vehicle from coming into the top speed. Every look and corner was given to this man, Harshit, but still fails it with 1 minute and 7 seconds in hand. देखिए बिल्कुल, और ऐसा लगा था बीच में यहाँ पर सही मायनों में कि हाँ भाई चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकते हैं, बट अंतिम क्षणों तक उसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन रख पाना उतना आसान इनके लिए यहाँ पर रहा नहीं, हर्षित के लिए। और लैप टाइम वो 1 मिनट 7 सेकेंड्स यहाँ पर रहेंगे, और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ शुरुआत थोड़ी सी और बेहतर, स्लाइटली यहाँ पर जो बेहतर है जो है करा जरूर जा सकता था, क्योंकि आप सैमसंग की डिवाइसेस पे यहाँ पर खेल रहे हो जहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक फुल FPS यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर और गेम की प्रैक्टिस होती, आई बिलीव कि एक खिलाड़ी जो है बेहतर कर सकता था। Absolutely. Now, understanding the basics of the game is very much crucial for those who love to play this game. You need to understand that if the vehicle is in top speed throughout the track, right, and that makes it so much more easier for you to cover longer distances. But again, in between, if you slow down, then you have the nitros. You need to recharge them and keep using them continuously. And let's see. There are going to be a lot more of these events coming up, a lot more of these faces coming up. All you have to do is be a part of it, and for that you need to click on the registration link which is there in the description below, and follow some small steps to make sure that you're there in the next phase of the game. चलिए इसी दौरान यहाँ पर रुक करेंगे अपने और एक और मुकाबले की तरफ, यानी कि 23rd यहाँ पर जो 23वें मैच की जो शुरुआत है अब होती नज़र यहाँ पर जो है आने वाली है। और ये जो हम लोग ऑलरेडी जितने भी यहाँ पर रेसेस यहाँ पर जो विटनेस कर रही हैं, फिनिक्स मार्केट सिटी चेन्नई के यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी स्टोर से यहाँ पर जो हमको ये लाइव एक्शन जो है देखने को यहाँ पर देखिए मिल रहा है। बट चलिए अब अगर बात करी जाए तो शुरुआत तो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर करी गई है, बट क्या कुछ रोल अप, क्या कुछ 360 डिग्री टर्न्स, क्या कुछ ड्रिफ्ट्स, या ड्रिफ्ट्स तो विटनेस करने को मिल रही है, बट बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ कोलिजन्स के चलते एक अच्छा खासा जो समय मुझे लगता है कि इनका भी थोड़ा बहुत व्यर्थ जरूर है, बट स्टिल एक परफेक्शन, एक मास्टर क्लास दिखाते हुए नजर आ रही है खिलाड़ी। Oh yes, finally a nitro shockwave, and look at how much distance he covered with that shockwave. A ramp would have helped him, again regain those nitros to go for another shockwave, but he's using it well when it comes to those curves. Just picked up another nitros. Consistency has been there. 260 kilometers per hour is what the speed he's trying to maintain over here. He knows his lines really well, and he's been using it to perfection. Yes, another nitros to be picked up over here. Misses it out, and that is where he might fall a little bit short. 1 minute already covered up. 1 minute 2 seconds, and again there's another racer who shows so many signs of wonder, and then eventually falls flat on his face with another 1.7.1 second race. देखिए पुज्जन ने यहाँ पर जो है ना चीज़ें अपने लिए बेहतर तो खैर देखिए वो बनाई थी, और एक क्षण ऐसा भी लगा था कि हाँ भाई बहुत 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 बखूबी तरीके से ये खिलाड़ी रेस करता नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एक हल्की फुल्की यहाँ पर जो एक कमी सी यहाँ पर जो रह गई। फिनिश उतना यहाँ पर जो है बेहतर नहीं कर पाए। पहले तो बूस्टर्स एंड नाइट्रोस और ड्रिफ्ट यहाँ पर काफ़ी बखूबी तरीके से यहाँ पर जो है देखने को यहाँ पर इनके द्वारा मिली थी, बट अल्टीमेटली एक शानदार प्रदर्शन जो है देखने को मिला। जरूर वो एक जब लीडर बोर्ड निकल कर आएगा उसमें यहाँ पर टॉप नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, क्योंकि हमने देखा है मल्टीपल प्लेयर्स को 1 मिनट 4 सेकंड और 5 सेकंड के अराउंड जो है रेसेस को ख़त्म करते हुए। बट अब बिना कोई यहाँ पर जो है ज़्यादा समय यहाँ पर जो है बर्बाद करे, एक और नई रेस की तरफ जो है वो रुख करेंगे, जो कि हमारी 24th रेस जो है वो रहेगी।
Absolutely, the 24th race is going to be again another ray of hope for all these players. Look at that initial knockdown. He's taking down two players and making sure that he comes into the top three just in the beginning of the race. 9 seconds already in, and now it's important for him to pick up those shortcuts. Yes, another player gets taken down. Just one more player left before he does something phenomenal over here. He puts a lot of them behind the track. But this time around, the drifts are going to make sure that he is not in the lines of the track. 25 seconds. He should have been a little bit better with these curves. Yes, he's got the nitros. No shockwave coming in. No shockwave coming in. And yes, a cone is running faster than him for some reason. देखिए बिल्कुल, और अगर बात कर ली जाए ना तो अभी कोशिश यहाँ पर इनके द्वारा जरूर करी जा रही है, बट चलिए एक शानदार यहाँ पर जो है कुछ टर्न अराउंड्स देखने को मिल जाएंगे। लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस को और भी ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाते नजर एक परफेक्ट रन देखने को मिल रहा है। बड़ा स्टिल फील कि समय इनको जो है अच्छा खासा लगने वाला, वो 1 मिनट 10 सेकंड से भी कहीं ज़्यादा का जो समय है वो इनको लगना जाए जरूर। कुछ बेहतरीन तरीके से टर्न्स यहाँ पर लिए गए, बूस्टर्स का इस्तेमाल कर गया, नाइट्रोस देखने को मिले, बट वही जो कि मैंने यहाँ पर चर्चा करी थी कि वो 1 मिनट 9 सेकंड लग जाएंगे लैप कंप्लीट करने में। Absolutely, and that's what I keep saying, that if you're doing too much of 360s unwantedly, where you're not being rewarded with any kind of nitros, and even though you're rewarded it, you're not using it in places which can help you catch up to the lost time. I don't think so. It's crucial for you to do. And with this, ladies and gentlemen, I do believe that we'll be stepping into the final few maps, final few tracks, and final few races of the day itself. Because yes, we're having a great time when it comes to the Phoenix Marketcity Chennai. We have to head on to another place as well where we'll be coming live. But for now, Phoenix Marketcity has given us some hopes of really good races. Match number 25, 25th racer in front of us in this phase 2, and all the way from Phoenix Marketcity Chennai, from a Samsung Experience store, another race for you guys. देखिए बिल्कुल, एंड अगर बात करी जाए, लेट्स सी यहाँ पर एक फाइनल रेस यहाँ पर जो हो सकती है इस फेज 2 की, अगर जैसे कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बताया। और चलिए स्टार्ट तो यहाँ पर जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शानदार देखिए जो है वो मिल चुका है। कोशिश यही करी जा रही है कि चीज़ें अपने हित में यहाँ पर जो है लेकर जाई जाए, बट अल्टीमेटली जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगे, नाइट्रोज एंड बूस्टर्स का इस्तेमाल जरूर लगातार होता नजर आ रहा है। ड्रिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो है ऑलरेडी विटनेस करने को मिलेंगी, बट क्या लग रहा है कितना समय इनको यहाँ पर लगेगा? More than a minute for sure, because I was expecting him to have a little bit of a better race altogether. Yes, there were some corners from which he was playing a little bit better, but it's also important for him to keep that average speed which we keep speaking about. And I believe that now it's already crossed the 1 minute marker, and he'll have to make sure that these obstacles do not stop in between. But it did give him a little bit of a hindrance, and due to which he's going to be finishing the race with more than a minute over here. And with the conditions he was holding out there, I believe that he might have won the race, but it's going to be crossing 1.6 seconds. देखिए बिल्कुल, और अगर बात करी जाए काफ़ी बखूबी तरीके से 1 मिनट 6 सेकंड में चीज़ें यहाँ पर जो है बेहतर यहाँ पर जो होती हुई नज़र जरूर आ गई। बट अंकित ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस की यहाँ पर जो है बात करी थी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शानदार प्रदर्शन जो है इनके द्वारा भी देखने को मिला। बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स को मुझे लगता है अगर ऑन एन एवरेज टाइम अगर निकाला जाए यार का, तो वो कहीं ना कहीं 1 मिनट 4 सेकंड और 5 सेकंड ही जो है वो निकल कर आएंगे। Absolutely. With this, ladies and gentlemen, now we come to a point where to see who are the top 3 players of the store. This is where it all comes down to check who is actually holding the top spot. Piyush, are you serious right now? Are you serious right now? 27 seconds is all it took to this man to finish this off. Oh, I do believe that, it was the previous track record. Yeah. I did see the name below that it was from a different, that is the yesterday's stream, or the last week's stream, where we had from that of Bengaluru. That was the race time which we see. But this time around, it's a different track altogether. So we'll be looking at the top 3 of this store. That is going to be Phoenix Marketcity Chennai. And I'm waiting to see who might have got that 1.3.2.
लेट्स सी कौन से वो जो है टॉप 3 परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है रहने वाले हैं चेन्नई की स्टोर की अगर बात कर लीजिए। और गाइस अगर आप लोग भी देखिए खेलना चाहते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर जो है चर्चा करी, तो सिंपली जाकर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। कल आप लोग भी एक्शन में Ooh. देखने को मिल सकते हैं। बट चलिए, आदर्श अशोक माइल सेकंड से, कुछ माइल्स सेकंड से यहाँ पर जो है माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पर जो है विनर बनते हुए नजर आएंगे। एंड राज अशोक की अगर बात कर ली जाए, 1 मिनट 3 सेकंड वो 63 यहाँ पर जो है कुछ सेकंड्स उनको लगे हैं। बट संजय कुमार दूसरी तरफ 1 मिनट 3 सेकंड्स और कुछ मिली सेकेंड्स 229। तो गैप तो यहाँ पर देखिए तीनों ही प्लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा कम था। Yeah, just 1 millisecond. वेल देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए कुछ जस्ट यहाँ पर जो है मिली सेकेंड्स थे, जैसे कि आप यहाँ पर जो है बता रहे थे, वही यहाँ पर जो है देखने को यहाँ पर मिला। और अभी अगर बात करें, आदर्श अशोक ने यहाँ पर जो है कम्प्लीटली एक रॉकिंग परफॉर्मेंस दिखाकर ये विनर बनते हुए यहाँ पर जो है नजर आ जाने वाले हमको इस चेन्नई फिनिक्स सिटी यहाँ पर जो है मार्केट सिटी यहाँ पर जो है चेन्नई यहाँ पर जो है जहाँ पर हमको सैमसंग स्टोर देखने को मिल रहा है। बट गाइस अगर आप भी इस तरीके से फिलहाल देखिए भाई विनर बनना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी जाइए हमारे साथ यहाँ पर जो है जुड़िए, क्योंकि अभी भी कल का दिन भी है जहाँ पर आप आज रजिस्टर करके कल के दिन खुद को एक्शन में लेकर आ सकते हैं। मुकेश ने भी काफी अच्छा यहाँ पर जो है करा, संजय कुमार भी उनसे यहाँ पर जो बेहतर है करते हुए नजर आए। बट अल्टीमेटली अगर यहाँ पर जो है बात करी जाए, जिस तरीके से यहाँ पर जो है चीजें चली आज के दिन, काफी इंटरेस्टिंग रेसेस, कुल मिलाकर वो 25 रेसेस हमने जो है एक साथ देखी हैं, जहाँ पर हर एक प्लेयर ने अपना दमखम यहाँ पर जो है लगाया। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर जो देखिए खेलते हुए नजर आए। बट गाइस आप लोग भी जाकर देखिए, एक इन प्लेयर्स ने तो एक परफेक्शन, एक मास्टर क्लास यहाँ पर जो दिखा दिया। बट आप लोग भी जाकर चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं हमारे सैमसंग स्टोर्स में जाके कुछ कमाल की डिवाइसेस को, जो कि नाम यहाँ पर रहने वाले हैं S24FE और Fold 6। पर्सनली मेरा फेवरेट यहाँ पर जो है Fold 6 रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर की बात करें वो भी काफ़ी शानदार है। रे ट्रैकिंग यहाँ पर जो है देखने को मिल जाने वाली है, जो कि आपको पीसी लाइक कुछ रियलिस्टिक यहाँ पर जो है ग्राफिक्स देगा, इमेजेस दिखाएगा। जैसे आप गेम खेलोगे तो आप एक गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार यहाँ पर जो है करोगे। बट वेपर कूलिंग चैम्बर की अगर बात करी जाए तो वो भी यहाँ पर काफी शानदार है, जो कि आपके इस गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा स्मूथ भी यहाँ पर बनाता है। बट चलिए देवी और सज्जनों, अभी के लिए फिलहाल इस स्ट्रीम को यहाँ पर जो है यहीं पे यहाँ पर करेंगे एंड मिलेंगे कुछ और नए एक्शंस के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए। वेल टाटा बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड साइनिंग आउट।